Good evening, my dear students. Welcome to today's session for the auditing and assurance subject. Students, I hope that so far you are enjoying these sessions and so far you all are making taking full advantage of these classes which have been organized by our Board of Studies. So a very good evening to Pooja, Siddharth, Hitesh, Nilabjo, Khushi, Bhardwaj, Siddhant, Banreddy. Again, Khushi Maheshwari and Khushi Kankari, Kaveri, Krishnan and Manoj. So students, today we'll be starting with chapter number 11, a very, very important chapter. Hana. And if you remember in the chapter so far, that is still chapter number 10, you must have came across about audit report. है ना कहीं audit report का reference आया था, and we always used to say that we will be discussing that in detail in chapter number 11. So now that time has come, and a very interesting chapter, very practical, and you are definitely going to enjoy this chapter and you will be able to understand and learn this chapter with ease. This is my guarantee to all of you. So I hope chapter number 10 that we have done in the last sessions is clear. You all have gone through that chapter and you all have started learning also, right? So please don't keep on piling the chapters for learning. Start learning the chapter side by side. As and when the session ends, try to complete the learning, the revision of the chapter there itself. Okay? So Nilabjo, your query with respect to chapter number 10, I'll be taking in the next session. Okay? So today we'll be starting with chapter number 11. And the name of the chapter is what? Audit report. Okay? So students, see, by so far you have came across a number of standards on auditing. Hannah. So let us just quickly revise as to what all standards we have done. And after revising all these standards, now I'll then quickly tell you as to why I have made you revised all these standards. Okay? So we started with essay 200, whereby we discussed about the overall objectives of an individual auditor and the conduct of an audit in accordance with standards on auditing. Okay? Essay 210 related to terms of audit engagement. Then essay 220 related to quality control of an audit of financial statements. Okay? So students, as and when I am discussing about all these essays, just start churning your mind and try to remember the relevant essay. Hana? This will show you as to how much you have understood so far and how much you have remembered so far. Okay? Then essay 230 is related to audit documentation. Essay 240 related to the auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statements. Okay? Essay 250 is consideration of law and regulation in an audit of financial statements. So as such, essay 250, 260, 265 you haven't done in detail, but somewhere or the other the name has come, and in this chapter also you will come across essay 260 and 265. Okay? So essay 260 is relating to communication with those charged with governance, and 265 is related to the communication of deficiencies in internal control to those charged with governance and management. Okay? Essay 299 we all have done in the last chapter, that is joint audit of financial statements, right? Responsibilities. Then essay 300 relating to what? Planning and audit of financial statement, right? Quickly tell me the name of essay 315. Consider it as a test of whatever you have understood and whether you have learned or not. Essay 315 में आपने क्या पढ़ा था? Quickly बताओ. Make this session interactive, है ना? Identifying and assessing
the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. Essay 320 relating to what? Materiality in planning and performing an audit. And essay 330 is what? The auditor's responses to the assessed risk. ठीक है. So Sarthak, Shri Ram, Hitesh, Bindu, absolutely correct. ठीक है, that's good if you remember. And for all those who do not remember, start learning. ठीक है. Then essay 500 series is all related to what? Your audit evidence. Right? Essay 500 relating to that is audit evidence. Essay 501 audit evidence, specific consideration for selected items. Essay 505 is external confirmation. Essay 510 is initial audit engagements for opening balances. 520 is analytical procedures. 530 is audit sampling. 540 relates to what? Accounting estimates. Hana? So as such, you haven't done it in detail, but in this chapter, a reference to the name of this essay will definitely come. Essay 550 related to related parties. 560 is subsequent events. 570 going concern. Quickly tell me what is 580? 580. So it is related to what? Written representation. Essay 600 we have done in the last chapter, which is what? The using the work of another auditor, related to branch audit. Essay 610 and 620, though you haven't done this in detail, but 610 is using the work of internal auditor and 620 is related to the use of work of auditor's expert. ठीक है. So Pooja, Siddharth, Shri Ram, Gehani, Khushi, Nilabjo, Himanshu, all are saying written representation for 580, which is absolutely correct. So students, till the 600 series essay, when the auditor conducts the audit, he fulfills the responsibilities, all the responsibilities mentioned in all these essays. Okay? Now, the auditor is conducting the audit procedures, and the management of the company is providing the auditor with the various information that the auditor is asking for during the course of audit. Now tell me, why are all these activities are happening? What is the reason? Why is auditor conducting all the audit procedures? Why has management appointed, or they are providing auditor with all these information? Quickly tell me, what is the end result that the auditor wants to give to the management, or what is the end result that the management wants? Quickly send in your reply. Whatever work is being done, what is the end product? क्या चाहिए management को? Yes. So Nilabjo is saying to enable the auditor to express an opinion. और opinion कैसे बताएगा? Management को जाके या mic पे announce करेगा auditor? नहीं. The auditor will express his opinion through a written report. That is the audit report. So we are discussing about audit report in this chapter. जो भी अभी तक काम ऑडिटर ने किया है, जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने दिया है, द ओनली रीजन इज कि द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, है ना, मैनेजमेंट इज प्रोवाइडिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज दे वांट द ऑडिटर्स to give an audit report which is addressed to the shareholders of the company. If you remember in chapter number 10, I told you that basically the two regulators for a company are whom? The management, internal regulators, if I'll say. So management, so shareholders have given their funds to the company, whereby these board of directors, the management, they are using this money and generating profits and giving the dividend to the shareholders. Now shareholders must know as to how their money has been utilized, and for that an independent person should conduct the audit, should examine the accounts of the organization, and that independent person, the auditor, is going to report to the shareholders that see, this is the audited financial statements, okay, and how in the form of an audit report. Okay. Now, so far, with respect to each and every aspect, be it related to verification of inventory, like audit of inventory, be it related to written representation, external confirmation,
be it related to any activity that the auditor is conducted, there are standards. So with respect to the audit report, which is so important, which is the end product of an audit activity, there ought to be standards which will guide, which will provide a standard. Basically, they lay down a standard for the auditor that you need to fulfill all these responsibility when you are giving an audit report to the client organization. And all these standards are contained in the 700 series. जैसे I told you ना that 500 series किसके लिए है? Audit evidence के लिए. So in this chapter we will be studying about what? Essay 700 relating to forming an opinion and reporting on financial statements. देखो ये जो भी काम ऑडिटर ने किया है, क्या करेगा वो? बस ठीक है, उसको पता है that financial statement reflected true and fair view, शेयर होल्डर्स को नहीं बताएगा? ऐसा नहीं है ना, शेयर होल्डर्स को तो बताना ही है ना, तो कैसे बताएगा? एक एक शेयर होल्डर को जाके थोड़ी ना बोलेगा. सो ऑडिटर विल गिव व्हाट? हिज ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, और वो फॉर्मेट उसका कहाँ दिया हुआ है? एसए 700 एंड इट इज मेंशन व्हाट? फॉर्मिंग एन ओपिनियन. ठीक है, सो एसए 700 डील्स विद व्हाट? अनमॉडिफाइड ओपिनियन. अभी अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है, मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है, दिस विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल. बट व्हेन अभी के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अनमॉडिफाइड मींस अनकंडीशनल, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्टेड ट्रू एंड फेयर व्यू, सब कुछ बहुत बढ़िया है. ठीक है, और वो कहां पर है? एसए 700 में. कौन सा फॉर्मेट यूज करना है? जो एसए 700 में मेंशन है. ठीक है, नाउ इज इट नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू ऑलवेज गिव एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन? So the answer is what? No. Obviously, अगर ऑडिटर को लगता है that the financial statement do not reflect a true and fair view, और ऑडिटर को लगता है कि I cannot give an opinion कि true and fair view है, auditor has an option to give what? A modified opinion. तो उसके लिए auditor will have to refer to what? SA 705. ठीक है, so we'll be doing essay 700, that is forming an opinion and reporting on financial statements. Essay 705 relating to what? Modified opinion. And what are the different types of modified opinion? This we will do when we will do essay 705 in detail. ठीक है, now communicating the key audit matters in the independent auditor's report. So this is contained in essay 701. Key audit matters. ठीक है, then emphasis of matter paragraph and other matter paragraph in the independent auditor report, which is contained in essay 706. ठीक है, also in this chapter students we will be covering essay 710 relating to what? Comparative information, that is corresponding figures and comparative financial statements. ठीक है, so basically I've given you an idea as to whatever you have done so far, all the essays, है ना, and why we are studying this chapter. ठीक है, and while we are studying this chapter we will come across all these essays. ठीक है, is it clear? ठीक है, is it clear? Right? ठीक है, now quickly answer one of my most favorite queries. Who is responsible for preparation of financial statements? Quickly send in your reply. देखो, whatever we have done so far ना in this session, एक quick revision हो गया, और अब आप सबको पता है that कितना आपको learn है. ठीक है, और what preparation you actually need. ठीक है, so management. Now my next question, who is responsible for implementing the internal control? So it is again the management. ठीक है, now what is the purpose of audit? I told you that the purpose of audit is to give an audit opinion, thereby enhancing the confidence of the users of the audited financial statements. है ना, if you go to a bank
है ना? If a client go to a bank for a loan and if he is having unaudited financial statement vis-a-vis a situation where the other client is having audited financial statement, the confidence of the bank authority, the banker, will be more on the audited financial statements vis-a-vis the as compared to the unaudited financial statement. So I can say audited financial statement enhances the confidence of the users of the financial statement. और वो क्यों होता है? Because we know that whatever reporting is done here is independent, है ना? We all have done as the definition of audit, है ना? Audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size and legal form, where such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. So this entire chapter, SA 700, SA 705, SA 701, SA 706 revolves up around this opinion. Okay? So the end result, I told you now why everything has been done for this opinion. Okay? So we have seen that it enhances the confidence of the users of the financial statement. Now tell me, we will be studying in detail today the format, the form and content of an audit report in terms of SA 700. Ab batao mujhe, if there is a set format that the auditor who is conducting the audit, in terms of these essays, has to follow this format, will it lead to consistency in all the audit reporting by all the auditors? Quickly send in your reply yes or no. Okay? Quickly send in your reply yes or no. So the answer is yes. Consistency to aa hi jayega na, because each and every auditor who is conducting the audit under the Companies Act, following the auditing standards on auditing. If you remember, we have done in chapter number 10 that it is the duty of the auditor to comply with the standards on auditing. So Companies Act में specifically mentioned है ना, तो standards of auditing में SA 700 भी आता है ना. So if all the auditors follow, abide by SA 700, तो सभी same format use करेंगे ना, and there will be consistency. There will be what? Comparability between the audit reports given by different auditors हैं, but since they are following the same format. Okay? And obviously, students, today you will see when we will discuss the form and content of an audit report. Now, there are specific headings that are given by SA 700 that the auditor needs to give information under each of these headings. Compulsorily, that format is to be used. So when those headings are used, the auditor is giving the information with respect to the audit for a client, then the value of the information that has been given by the auditor also increases. ना ऐसे थोड़ी ना auditor के मन में कुछ भी आ रहा है वो he is writing in the audit report. जो information is going to add value to the user's understanding of the audited financial statement. If auditor is giving information with respect to all those headings, obviously that will increase the value of the auditor reporting. Clear? And since a standard has been maintained, like SA 700 is there, whereby a set format is there, students, if each and every auditor in India is following that format, it is going to increase the credibility of the reporting by the Indian auditor in the global marketplace. Okay? And thereby enhancing the user's understanding. Now, if I am a shareholder, I'm going through the audit report and I know I have a basic understanding. I have the knowledge of understanding the financials, the financial information that is coming and the audit report. Okay? And I'm going through all these headings. This will definitely help me. This will definitely help me in enhancing my understanding about the financials of the organization. ठीक है? तो अब समझ आया कि format क्यों चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है ना कि सारे ऑडिटर्स जितने भी हैं इंडिया में दे विल फॉलो देयर ओन फॉर्मेट. कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है. दो दे आर ऑल प्रोफेशनल, दे आर ऑल एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, बट देयर इज अ नीड फॉर अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, है ना? बिकॉज क्वालिटी तो मेंटेन करना है ना.
credibility, comparability, consistency तो लेके आना है ना. So that is the reason why there is a need for SA 700. ठीक है. So the first essay that we will be covering in today's session is what? SA 700, and the name of the essay is what? Forming an opinion and reporting on financial statements. And students, as I always tell you, that when you have to understand any concept, now try to break it into parts. Okay? So I break this name into two parts: forming an opinion and reporting on the financial statements. Okay? So just forming an opinion and reporting on the financial statements. Okay? See, by the name of the essays, na, a lot can be understood. Ab yahan se, when you see essay 700, forming an opinion and reporting on financial statements, you can understand that this essay is about forming an opinion. Pehle to opinion form karni hai. Then I told you ki opinion form karke, will auditor keep that opinion in his drawer? No, he will report on such financial statements. So basically, I told you that essay 700 talks about opinion and about what? Unmodified opinion. है ना? Unmodified opinion. Because अगर modified opinion देना है तो essay 705. And reporting on financial statement, it means essay 700 talks about the form and content of audit report. The form and content of audit report. Okay? Now, the objective of the auditor in terms of essay 700 is hidden in the name of the essay itself. So quickly, without looking at your module or without looking at the table that I have made in this Word file, quickly tell me what according to you is the name of is the objective of the auditor in terms of essay 700. Quickly बताओ क्या objective होगा auditor का? So Hitesh, the language that Hitesh is saying, ma'am, is it necessary to give it in the opinion in a technical language, or it can be in a general language? So today we will be discussing in detail about the language that is practically used by all the auditors. Because I told you that in the Companies Act, there is a responsibility on the auditor to follow the standards on auditing. And one of the standards is what? SS 700. So, jo SS 700 mein the language that has been given, that will be used by the auditor. So here I'll take up this doubt in the next session. Okay? So, so what are the objectives? So, dekho. The objective of the auditor is to form an opinion and to express clearly that opinion through a written report. Oral report कुछ होता है? सभी shareholders को जाके auditor will tell that okay, the financial statement reflected true and fair view. No, not possible. हाँ, एक written report लिख सकते हैं जो सबको which can be forwarded to each and every shareholder. ठीक है? So the first objective of the auditor is to form an opinion. See, from the name, forming an opinion and reporting on the financial statement. And the second objective of the auditor in terms of SS 700 is to express clearly that opinion. I told you ना वो opinion बना के drawer में थोड़ी ना रखना है, उसको express करना है through a written report. Through a written report. ठीक है? So now, what is the objective that has been given? So we will read this entire point. So point number 1 says to form an opinion on the financial statements, okay, based on the evaluation of the conclusions drawn from the audit evidence obtained. You all have done chapter number 3, definition of audit evidence. So whatever audit evidence the auditor has obtained, based on these audit evidence, auditor will draw certain conclusions, and these conclusions, auditor will evaluate all these conclusions, and then the auditor will give an opinion. He will form an opinion. Simple है ना? Audit evidence obtain किया,
conclude kiya about the various assertions, evaluate kiya the results of all these conclusions, and then the opinion is arrived at. So to form an opinion on the financial statement based on what? Evaluation of conclusions drawn on the audit evidence obtained, and to express clearly that opinion through a written report. So these are the objective of the auditor in terms of SA 500. Now quickly tell me, I need answers. When the auditor is conducting an audit, when the auditor will be forming an opinion, will the auditor obtain a reasonable assurance or an absolute assurance? Quickly send in your reply. Quickly send in your replies. So the answer is reasonable. So when the auditor is making the conclusions, the auditor needs to take into account. Now, what conclusion basically? So auditor is concluding that whether he has obtained reasonable assurance. So reasonable is what? Which is not absolute. Assurance. Okay? So a reasonable assurance that the financial statements are prepared in all material respects according to the applicable FRF. अब ये क्या बोल दिया मैम ने? देखो, जो भी हमने ओपिनियन देना है उसके लिए we obtain a reasonable assurance. ठीक है? Why only reasonable? Because we all know that there are certain inherent limitations of audit. है ना? You all have done in chapter number 1. Audit reduce cannot be reduced to 0. है ना? तो reasonable assurance होता है. Now what reasonable assurance? So I can say when the auditor is giving an unmodified opinion, मतलब कि सब कुछ बहुत अच्छा है, तो auditor is obtaining a reasonable assurance that financial statement reflect a true and fair view. Or I can say that the financial statements are prepared in all material respects in accordance with applicable FRF, in accordance with applicable FRF. ठीक है? So what is applicable FRF? अभी के लिए try to understand that whatever rules, whatever procedures, whatever standards the company, the client organization has to follow, उसी के according बना है ना? And you all know that SA 320 materiality से ही we are concerned. So in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework. Or I can also say that the financial statements of an organization are free from material misstatement whether due to fraud or error. है ना? ये सब आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है ना? So basically unmodified opinion में क्या होगा? Auditor यही सब बोलेगा. कैसे बोलना है, कैसे रिपोर्ट करना है, that we will see in the format. ठीक है? Now when the auditor is concluding, he is obtaining what? A reasonable assurance. And when the auditor is concluding about this thing, that reasonable assurance मिल गया है, what all will auditor consider? Just a minute. So the auditor will consider that whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained, है ना? Audit sufficient appropriate audit evidence के ऊपर ही तो auditor will conclude. So that conclusion will take into account whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained, whether uncorrected misstatements are material individually or in aggregate. इसका क्या मतलब है? देखो, suppose there were 5 misstatements in the financial statements. The auditor approaches the management and tells the management about all these 5 mistakes. The management out of these 5 corrects 3 misstatements and 2 are left what? Uncorrected. है ना? So whether uncorrected misstatements, है ना, identify तो हो गई हैं, but these are still uncorrected, whether these are material individually or in aggregate, तभी तो conclude करेगा ना auditor. So first of all, what? Whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained.
Secondly, whether uncorrected misstatements are material individually or in aggregate, and the auditor shall consider various evaluations that he has done during the course of audit. Okay? So basically what we are studying, that when the auditor is giving an unmodified opinion, so basically he wants to obtain a reasonable assurance that the financial statements are prepared in all material respects according to the applicable FRS. Or in other words, I can say that the financial statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Okay? So while concluding that, auditor shall take into account three things: that whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained. If the auditor has not obtained sufficient appropriate audit evidence, he cannot conclude that a reasonable assurance has been obtained. Hana? Same way, whether uncorrected misstatement are material individually or in aggregate, and various evaluations. Okay? So we will do one thing. There is a 2-page discussion on evaluation topic in your module at page number 11.4 and page number 11.5. Okay? So this abhi ke liye I'm giving you as a homework for this first session. Jab bhi we'll be meeting for the next second session for this chapter, I will definitely take up this topic. But first of all, I want all of you to go through this topic on page number 11.4. So it is paragraph number 1.3 and paragraph number 1.4. Okay? So students, is it clear? Is it clear? So Hitesh is saying, ma'am, is it possible that some information may get skipped by the auditor? Go back to your topic of inherent limitations of audit, Hitesh. Reasonable assurance तभी तो बोलते हैं ना, ठीक है? And obviously, auditor is expected to exercise professional skepticism, professional judgment, due care, diligence throughout the conduct of audit. ठीक है? Hitesh, is it clear? Okay, so I've given you that topic as a homework. I'll definitely discuss it in the next session. Okay. Now, students, tell me what is meant by general purpose framework. Do not look at the screen or your module. Tell me what is meant by general purpose financial statements. General purpose financial statements. देखो, general purpose financial statement को अगर आप देखोगे ना, तो SA 700 says that the financial statements which are prepared using the general purpose framework. So general purpose financial statement are financial statements prepared in accordance with general purpose framework. ठीक है? And what is general purpose framework? A financial reporting framework designed to meet the common financial information needs of a wide range of users. ठीक है? अब यहाँ पर let us try to understand all these things. देखो, financial reporting framework. ठीक है? So let us again, in order to understand, divide it into two parts: financial reporting and framework. ठीक है? तो framework को I can say the structure as to how the financial statements are going to be presented using the various rules, the various standards. Framework दिया है ना एक, as to this is the standard you need to follow. These are the rules you need to follow. This is the structure how the financial statements will look like. And what is financial reporting? Reporting of financial information of a client organization of any company. Let's say we are talking about company here. So a company. So financial reporting framework. So basically the set rules or standard or a structure with respect to reporting of the financial information of a company. Quickly give me example of any financial reporting framework. So I can say the source of financial reporting framework can be the accounting standards, the Ind AS,
द Schedule 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, है ना, ये बताते हैं ना कि कैसे आपको प्रेजेंटेशन करना है, कैसे आपको व्हाट इज द स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिसिएशन को कैसे करना है कैलकुलेट, है ना. इट टेल्स यू अबाउट वेरियस थिंग्स with respect to the financial reporting, the reporting of the financial information of a company. ठीक है. Now with respect to general purpose, अब देखो general purpose as the name suggests, जो general purpose के लिए है, that is which meets the common financial information needs of a wide range of users. सो जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है. सो व्हेन वी प्रिपेयर द फाइनेंशियल, व्हेन द क्लाइंट प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर द इंड एएस फॉलोइंग द शेड्यूल 3, तो ये क्या है, जनरल पर्पस, है ना. लेट्स डिस्कस अबाउट स्पेसिफिक पर्पस. अब बताओ ये स्पेसिफिक पर्पस फ्रेमवर्क या स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हुआ. देखो स्टूडेंट्स, अभी तक व्हाटएवर एसेस यू हैव डन ना, दे आर रिलेटेड टू जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली, है ना, कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं विच इज एज पर लेट्स से एएस, इंड एएस, शेड्यूल 3, तो वहां पर ऑडिट कैसे होना है, एंड दी रिपोर्टिंग एस 700 का भी with respect to general purpose financial statement ही बात करता है. Now, what is specific purpose? Though it is not given in your module, but just try to understand that let's say there is a company A Limited and it wants to get a loan from a bank, and the bank manager says that if you want to avail a loan, you need to bring the financial statements containing various informations. ठीक है, and based on those informations only the bank will sanction the loan. So these financial statements will be prepared by A Limited for the specific purpose of obtaining a loan. So when we are discussing about SS 700, we are not discussing about what specific purpose financial statement, and the essays of 800 series talks about 800 series talk about what, the specific purpose financial statement, which is not in your syllabus as such. ठीक है. So अभी हम जहां पर भी बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Clear? General purpose financial statement. Now let us just have a look at all the definitions that are given in SS 700 and very important. So general purpose financial statement क्या होता है? The financial statement which are prepared as per general purpose framework. ठीक है. General purpose framework क्या होता है? A financial reporting framework designed to meet the common financial information needs of a wide range of users. बताओ इतना clear है? For a specific purpose, Karthik, basically for a specific purpose, the financial statements are prepared. If I talk about what, specific purpose financial statement, okay? But SS 700 is for what, general purpose financial statement, and in fact all the essays that you have done so far are what, with respect to general purpose financial statements only. Now tell me, is it clear जितना भी अभी तक हमने discuss किया है? Now, this general purpose framework, the financial reporting framework, general purpose, it is of two types. So, fair presentation framework and compliance framework. ठीक है? Fair presentation framework and compliance framework. Now, try to understand. So, what is common here? Framework. So, that means with respect to fair presentation framework, as well as with respect to compliance framework, framework तो है, मतलब कुछ structure तो है, कुछ rules तो हैं, कुछ standards तो हैं that need to be complied with. तभी तो standards बनाए हैं ना कि comply करना है when the company is preparing the financial statements. तो दोनों में what is in common? Framework, that compliance to the standards are required. So don't get confused कि compliance word तो मैम यहाँ पे है, compliance से I mean क्योंकि framework है तो उनको comply तो करना ही है, उनको follow तो करना ही है. So this is in common between fair presentation framework and compliance framework. ठीक है? Now fair presentation framework, apart from asking the company
to or the entity to comply with the standards, with the rules that are mentioned, it allows something, कुछ additional है fair presentation framework में, ठीक है. So compliance framework तो क्या कहता है कि whatever rules, whatever standards are mentioned, now whatever structure is given, the entity need to follow it. That's it. बस उसको comply करना है. Compliance framework यहीं खत्म हो जाता है, ठीक है. Fair presentation framework says that whatever rules, standards, whatever structure is there, the entity needs to comply with it, and it allows two things. It acknowledges, the word that you will see in your module in the essay is what? Acknowledges. That is allows. It allows the entity to do two things which is not allowed when the company is following what? Compliance framework. So what fair presentation framework allows to an entity is to make any additional disclosure if required. And students, you will see that in the AS, in your schedule 2, schedule 3 of the Companies Act, it is specifically mentioned कि comply तो करना ही है to whatever rules, regulations and structure is mentioned within the framework, but the management may make additional disclosure if it is required to make a fair presentation. अगर आप management को लगता है कि framework follow करने से fair presentation नहीं आ रहा है, management may make what? Additional disclosure. Same way, it allows the auditor to make departures, that is to deviate कि accounting standard में, let's say there is a requirement, but management feels by following that requirement the fair presentation will not be achieved, then the management may depart from it. ठीक है? Let me just show it to you. It will definitely give you a better understanding. देखो, just a minute. Just a minute. So see, this is Ind AS, है ना? अच्छा नहीं, I haven't shared it. Just a minute. ठीक है? So so this is Ind AS1. देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है. Just be with me. बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको ये. देखो ये वाला पैराग्राफ पढ़ो. Financial statement shall present a true and fair view of financial position, financial performance, and cash flows of any entity. Presentation of true and fair view requires faithful representation of the effects of transactions, other events, and conditions in accordance with the definition, recognition, criteria of assets, liabilities, income, expenses set out in the framework. What is it saying? कि framework को तो follow करना ही है. Faithful representation of effects of transaction देना है, assets, liabilities. ठीक है? The application of Ind AS with additional disclosures when necessary is presumed to result in financial statement that present a true and fair view. तो अब Ind AS 1 में specifically ही mention कर दिया है that आपको follow तो करना ही है, but अगर कुछ additional disclosure, if it is necessary, it will be presumed that it will result in financial statement that present a true and fair view. तो देखो यहीं पर acknowledge कर दिया ना, यहीं पर allow कर दिया ना, यहीं पर mention कर दिया ना that अगर किसी entity को कुछ additional disclosure देना है apart from whatever has been mentioned in the Ind AS, and if it will lead to a better presentation, then the management may do that. ठीक है? समझ आया? Same way, now read this paragraph 19 with me. In extremely rare circumstances in which management concludes that compliance with the requirement in Ind AS would be misleading,
that it would conflict the objective of financial statement set out in the framework, the entity shall depart from the requirement in the manner set out in paragraph 20 if it is relevant, if the relevant regulatory framework requires or otherwise such a departure. मतलब departure भी कर सकते हैं. What does that mean? कि कोई disclosure है, but if it will lead the financial statement to the misleading, management को ऐसा लगता है, management may depart in extremely rare circumstances. Obviously अगर management ऐसा कुछ disclosure नहीं करता है, which is required in Ind AS, if management makes any departure, तो कुछ ना कुछ disclose करना पड़ेगा, which is given in paragraph 20 of this Ind AS, कि ये सब मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि क्यों किया. The management shall disclose that the management has concluded the financial statement presented true and fair view, that it has complied. मतलब ये सब तो है. So basically either I wanted to show you that Ind AS में specifically acknowledge किया है, allow किया है, mention किया है that the entity may make additional disclosure or the entity may in rare circumstances may depart from the requirement of the Ind AS. ठीक है. So अब देखो, अब हम वापस से चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 11 पर. एंड नाउ फेयर प्रेजेंटेशन पे आई टोल्ड यू कि कॉमन क्या है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में, कि दोनों फ्रेमवर्क है, मतलब फॉलो तो करना ही है जो भी रूल्स रेगुलेशंस व्हाटएवर इज मेंशन्ड देयर, एसेट्स के लिए, लायबिलिटीज के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, इनकम के लिए, वो मेंशन तो करना, वो फॉलो तो करना ही है. सो द टर्म फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क is used to refer to a financial reporting framework that requires compliance with the requirements of the framework. तो framework वैसे थोड़ा बना दिया है, comply तो करना ही है ना. Same way here also in compliance framework is used to refer to a financial reporting framework that requires compliance with the requirements of the framework. तो दोनों में तो compliance with the framework है. Then what is the difference? अब देखो difference क्या है. And fair presentation framework acknowledges 2 point. Acknowledges is what? Allows. और आपने देखा ना specifically mentioned है. Same way if you go to schedule 2 जहां पर useful life of the asset दिया होता है ना, और schedule 2 to the Companies Act, तो वहां पर भी it is mentioned that management may take a different useful life for a particular asset, but yes कुछ disclosures देने पड़ेंगे. तो वहां पर भी specifically it is mentioned that the management may make certain departures or may give some additional disclosure, may use a different useful life, but yes there should be a valid reasoning for that, है ना. So देखो, acknowledges explicitly or implicitly. Explicitly is expressly mentioned or implicitly is what? Implied. ठीक है. That to achieve fair presentation of the financial statement, it may be necessary for management to provide disclosures beyond those specifically required by the framework. कुछ additional disclosure देने हैं तो दे सकते हैं. For example, let's say we are conducting the audit of A Limited, है ना. A Limited has prepared the financial statement in terms of, let's say, Ind AS. Now, if we, or accounting standards, if we, according to we are the auditors, and if according to our professional judgment there is a need to give any disclosure, we can always tell A Limited na that please give a disclosure with respect to this assertion, please give additional disclosure with respect to this assertion, so that it helps to enhance the user's understanding. So अगर better presentation होता है उसके लिए the management is allowed to provide disclosures beyond those specifically required by framework, or acknowledges explicitly that it may be necessary for management to depart from the requirement of the framework to achieve fair presentation of financial statement. Such departures are expected to be necessary only in extremely rare circumstances. ठीक है. So explicitly means where it is expressly mentioned, है ना, and implicitly means where it is implied. ठीक है. You all must have done the topic of assertion in your chapter number 3. वहां पर तो explicit और implicitly का आपने detailed discussion I am sure किया होगा. ठीक है. Hiral, is it clear? So, and
So let us have a look at fair presentation framework. So the term fair presentation framework is used to refer to a financial reporting framework that requires compliance with the requirements of the framework and acknowledges two things, explicitly or implicitly, that to achieve fair presentation of the financial statement, it may be necessary for management to provide disclosures beyond those specifically required by the framework. Or point number two, acknowledges explicitly that it may be necessary for management to depart from the requirement of the framework to achieve fair presentation of the financial statement. Such departures are expected to be necessary only in extremely rare circumstances. क्यों extremely rare circumstances और why explicitly? Because यहाँ पर आप information कम दे रहे हो ना, depart कर रहे हो, तो वो explicitly mention होना चाहिए. वो आप extremely rare circumstances में करो. यहाँ पे क्या है, you are giving some additional information. ठीक है, Hiriel, is it clear? जो आपका doubt था, ठीक है. Now the term compliance framework is used to refer to financial reporting framework that require compliance with the requirements of framework. Framework है तो comply तो करना पड़ेगा. But very important line, but does not contain the acknowledgements in one or two above. But management को the compliance framework will never allow to give any additional disclosure or to make any departures. जैसा है वैसा ही reporting करना है, जैसा है वैसा ही comply करना है. No requirement of additional disclosure, no requirement of departure. समझ आता है? General purpose financial statements, general purpose framework and general purpose divided into two parts, that is fair presentation. अब देखो, I told you students, इंड एएस या जो आपका एएस या जो आपका शेड्यूल 3 का है, ये सब क्या है, फेयर प्रेजेंटेशन है, बिकॉज ये आपको अलाउ करता है. नाउ स्टूडेंट्स देखो, बहुत लॉजिकल है. Whatever opinion we give, what is the line that we use? The financial statement reflect a true and fair view. Now connect it with the language that is used in the audit report. Audit report में हम क्यों लिखते हैं true and fair? Because we are reporting on what? Fair presentation framework. अब compliance framework में the auditor is not allowed to use the word what? True and fair. है ना. compliance framework में whatever guidelines, whatever rules or regulations are there, the auditor needs to follow that, but उसके extra कुछ नहीं करना है, कोई additional disclosure नहीं देना, कोई departure नहीं देना है. fair presentation framework follow हो रहा है, तो हम भी तो as an auditor we will give our opinion that financial statement reflected true and fair view. ठीक है, बताओ, is it clear? है ना. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? We have gone through the definitions that are given in our SA 700. General purpose financial statements क्या होते हैं? That are prepared as per general purpose framework. General purpose framework क्या होता है? Financial reporting framework क्या होता है? समझ आता है ना. Framework क्या? Standards, rules, structure. Financial reporting, the way the financials of an entity will be reported. ठीक है, तो उसके लिए एक set guidelines है. ठीक है. So general purpose is what? The financial reporting framework designed to meet the common financial information needs of a wide range of users. And students, you must have came across the word applicable financial reporting framework. That means whatever is the applicable financial reporting framework with respect to entity, the entity needs to follow that. ठीक है. The term fair presentation framework, a fair presentation क्या है कि compliance तो करना ही है. Compliance framework भी कहते हैं compliance तो करना ही है, but acknowledges, fair presentation में there are two acknowledgement. Acknowledges मतलब allow क्या करता है कि additional disclosure कर दो beyond those specifically required by framework, या in extremely rare circumstances the management may make departures. ठीक है, is it clear? पर आपने देखा कि डिपार्चर्स करने हैं तो बहुत सारी रीजनिंग एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी गिवन. ठीक है, सो इज इट क्लियर? क्विकली बताओ, देन वी विल discuss the definition of unmodified opinion that is again given by SA 700. Let me just have a look at the queries.
Hiral, specific purpose financial statements are prepared for a specific purpose. You have mentioned personal, but I think that is by mistake. ठीक है, चलो ठीक है. Now let us discuss the definition of unmodified opinion, है ना? तो unmodified opinion. तो quickly बताओ, what is the dictionary meaning? अच्छा, what do you understand by the term unmodified? Unmodified क्या मतलब है? Unmodified. क्विकली बताओ, अनमॉडिफाइड का क्या मतलब है? So I can say unconditional, unrestricted. So I, as an auditor, I have checked the balance sheet, I have checked the P&L, I have checked all the disclosures given in notes to accounts, and I feel that the entire set of financial statement are free from material misstatement. अनकंडीशनल, ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है विच इज मटीरियल, है ना? Unconditional. So whatever opinion I am giving to the users of the audited financial statement, so मैं उनको क्या बोल रही हूँ, that सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है. The financial statement in all material respects give a true and fair view. The financial statement are free from material misstatement, whether due to fraud or error, है ना? Unmodified, unconditional, unrestricted. And I told you in the very beginning that it is not always necessary for the auditor to give an unmodified opinion. फिर audit ही क्यों करवाया ना अगर unmodified opinion ही चाहिए? Auditor may give a modified opinion, which may be a qualified opinion, an adverse opinion, or disclaimer of opinion, which we will be discussing in detail in the next session when we will start with SA 705. है ना? अभी तो हम SA 700 डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर ओपिनियन की बात होती है, मोर स्पेसिफिकली किसकी? अनमॉडिफाइड ओपिनियन की, और जहां पर फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट की बात होती है. तो what is an unmodified opinion? Let us have a look at the definition given by SS 700 itself. The opinion expressed by the auditor, simple, when the auditor concludes that financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable FRF. The opinion expressed by the auditor. देखो, opinion कौन दे रहा है? Auditor ही तो दे रहा है, management थोड़ी ना opinion दे देगा. Auditor will give the opinion. When the auditor concludes, अपने conclusion पे ही तो opinion देगा ना. So when the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respects, SA 320, materiality से ही तो concerned होते हैं ना हम. What is the name of SA 320? Materiality in planning and performing an audit, है ना? In accordance with applicable FRF. So whatever is the applicable FRF, है ना? वहां whatever is the applicable FRF, whether financial statements have been prepared in all material respects as per such applicable FRF. If such is a situation, the auditor will give an unmodified opinion, है ना? So which is not modified, which is unconditional. ठीक है? ठीक है, क्लियर है? डेफिनेशन ऑफ अनमॉडिफाइड ओपिनियन कि सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोल रहे हैं? द ऑडिटर इज सेइंग सब कुछ बढ़िया है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ठीक है, जहां पर ऑडिटर को बोलना है कि सब कुछ बढ़िया नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, या मुझे नहीं पता क्या गड़बड़ है, तो वहां पर कौन सी ओपिनियन आएगी? मॉडिफाइड. वो कैसे आएगी? SA 705 में. क्लियर है? ठीक है. सो अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या है? SA 700 में डिफाइंड है. मॉडिफाइड ओपिनियन क्या है? हम कब पढ़ेंगे? जब हम SA 705 में. ठीक है, देखो लिखा है ना, द ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद SA 705.
ठीक है. So जो we were discussing about what SA 700 forming an opinion and reporting on financial statement. तो forming an opinion वाला part is done. हाँ, evaluation वाला part I have given to you as a homework. ठीक है, which I'll discuss in the next session. And now the reporting on financial statements. And students, I told you, you are going to find it very, very interesting. जो reporting वाला part है ना. So auditors report. पहले बताओ, oral report होती है क्या? ऑडिटर सबको, सभी शेयर होल्डर्स को, उनको जा जाके बता देगा या माइक लेके अनाउंस कर देगा कि देखो, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस क्लाइंट रिफ्लेक्ट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, या राइटिंग में होनी चाहिए? बताओ. सेंड इन योर रिप्लाई. लॉजिकल सोचो ना, इतना सारा काम किया है. वी आर टेलिंग द ऑडिटर टू मेंटेन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, है ना, राइटिंग में मेंटेन करना है. रिटन रिकॉर्ड, इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बाय SA 230, है ना. So Karthik is saying no oral report. Gehani is also saying no, ma'am. Hitesh is saying ma'am written report. So auditor's report shall always be in writing. Okay, and if you remember, I told you in the very beginning of this session that since there are specific headings that are given by SA 700, so it enhances the value of the audit reporting. क्योंकि अब कोई भी ऑडिटर कुछ भी नहीं लिख रहा है ना, ऑडिटर को SA 700 फॉलो करना ही है ना. रिपोर्टिंग में SA 700 फॉलो करना ही है, मतलब whatever format, whatever headings are given, so auditor needs to give information with respect to those headings when he has conducted the audit of the client organization. So this SA 700 requires use of specific headings which are intended to assist in auditor's report more recognizable where audit is conducted in accordance with the relevant standards on auditing. So if a user of the financial statement is and it is always expected that the user have the ability to understand the financial information, है ना. They are financially literate, है ना. तो users of the financial statement में वही सब तो आते हैं ना. So it basically says that when the user of the financial statement reads the auditor report and it has the specific headings which are mentioned here, so he will be able to know that the audit was conducted in terms of the essays, है ना. क्योंकि essays की requirement है, and students later on we will see that unless and until these headings are followed ना, auditor cannot mention in the report that I have followed the essays. Because अगर आपने essay follow किए हैं and you want to give a report, you will have to follow this format. ठीक है, is it clear? तो बहुत simple है. Auditor's report for audits conducted in accordance with the standards on auditing. So what I'll do is I'll share with you a practical report of a company, and students, you will see that exactly the same language that is mentioned in your module, exactly the same language is practically used by all the auditors, है ना. So why? Because it is given in SA 700. ये requirement है तो है, ये language use करना है तो करना ही है. ठीक है. So basic elements of an auditor report are given below. तो देखो क्या क्या है. Title है, address is there, auditor's opinion is there, basis for opinion is there, going concern, key audit matters, responsibilities for financial statement, auditor's responsibility for the audit of financial statement, location of description of auditor's responsibility, other reporting responsibility, signature of the auditor, place of signature, and date of auditor's report. पर अभी समझ नहीं आया, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो दिस इज अ प्रैक्टिकल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी. ठीक है, जस्ट अ मिनट. Students, just 1 minute.
So I hope जितना भी हमने किया है वो सब clear है. Quickly send in your replies. ठीक है. So this is a practical report of a company. So देखो, whatever is written in these boxes ना, this I have written for a better understanding. ठीक है. So देखो, independent auditors report. What is this? This is a title. And if you have seen, what was the first point here? Title. ठीक है. Then to the members of, this is the name of the company. So to the members of so and so company. So this is what? Addressee, to whom the independent auditors report is addressed. ठीक है. Then another paragraph is what? Opinion. Opinion ही तो देना है ना? And the next paragraph is what? Basis for opinion. ठीक है. Is it clear? अब देखते हैं मॉड्यूल में. So title we have seen, addressee we have seen, auditor's opinion we have seen, and basis for opinion we have seen. Clear? ठीक है. Then material uncertainty related to going concern. You all have done SA 570 in chapter number 3. है ना. अब पता चलेगा आपको that whether you remember all these provisions or not, है ना, because I'll be asking you a number of questions now. Key audit matters. ठीक है. This is the next paragraph. Let us have a look at this. So going concern. Key audit matters. अब यहाँ पर ये दोनों देखो, responsibilities for financial statement and auditors responsibility for the audit of financial statement. तो अब यहाँ पर देखिए practical report में responsibilities for financial statement. तो कौन responsible होता है? तो responsibility of management and those charged with governance of financial statement, है ना, and auditors responsibility for the audit of financial statement. ठीक है. Now have a look at the next paragraph here. Report on other legal or regulatory requirements. ठीक है. So let us see, ऐसा कुछ है यहाँ पे. So responsibilities हमने देख लिया है. Auditor's responsibility भी देख लिया है. Location, I'll tell you what exactly it is, and other reporting responsibility. Then signature, place, and date. है ना. So let us have a look at this practical report. So whereby the digital signatures, the place and the date of audit report is mentioned, है ना. तो जो practically होता है ना, वो ही format we will be discussing, है ना. Clear? कोई doubt है? बताओ, अभी तक कोई doubt है? Quickly send in your reply. Is there any doubt? ठीक है. Now, auditors report for audits conducted in accordance with SA. So these are the various specific headings. So let us start with title. So title, देखो जहां पर आपने मेंशन कर दिया ना, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो नाउ देयर इट इज क्लियर कि ये इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट की रिपोर्ट है. तो इट विल डिस्टिंग्विश दिस रिपोर्ट, इट विल डिस्टिंग्विश दिस रिपोर्ट फ्रॉम अदर रिपोर्ट्स. Such title will distinguish this report. The auditor's report shall have a title that clearly indicates that it is a report of an independent auditor. So, for example, independent auditor's report distinguishes the independent auditor's report from reports issued by others. For example, internal auditor अगर कोई report issue करता है, तो वो independent auditor's report थोड़ी ना mention करेगा. Statutory auditor, since
he is independent to the organization. So that is why it is mentioned independent auditors report. Clear है title? Title, ठीक है. Now the second part is what? Addressee. कि किसको address करना है, ठीक है. कोई letter आप लिखते हो तो किसी को address करते हो ना, address है ना, किसके लिए आप कर रहे हो, ठीक है. So to auditors report, sorry, the auditor's report shall be addressed as appropriate based on the circumstances of the engagement. अब देखो auditors report, जो independent auditors report है ना, in case of a company it will be addressed to whom? To the shareholders of the company, है ना. There are various users, but वो address हम किसको करते हैं? To the shareholders of the company. And I have told you why. Because पर्पस ही क्या है कि शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है, कंपनी उसको यूज कर रही है, एंड इन रिटर्न ऑफ दैट इट इज जनरेटिंग प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड दे रहे हैं. बट शेयर होल्डर्स मस्ट नो ना कि सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं, है ना. तो वो रिपोर्ट भी कहाँ जाएगी? रिपोर्ट विल बी एड्रेस टू द शेयर होल्डर, टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. क्विकली टेल मी, इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, बताओ वहां किसको जाएगी रिपोर्ट? पार्टनरशिप फॉर्म में किसको रिपोर्ट एड्रेस करोगे? अदर्स में पूजा, आई गेव यू एग्जांपल ऑफ व्हाट? इंटरनल ऑडिटर. अब इंटरनल ऑडिटर तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट नहीं लिखेगा ना. पूजा, इज योर डाउट क्लियर? है ना. एंड व्हाट वाज माय डाउट? बताओ पार्टनरशिप फर्म में किसको एड्रेस करें? नीलाब्जो इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सोनिका, कार्तिक, हिमांशु, श्रीराम एब्सोल्युटली करेक्ट. गेहानी, सार्थक, बैन रेड्डी, सिद्धार्थ, प्रभास, हिरन, ठीक है. तो टू द पार्टनर्स, है ना, वहां तो हम पार्टनर्स ऑडिट करवा रहे हैं ना. So to the partners, ठीक है. So what is the logic? So the auditor's report is normally addressed to those for whom the report is prepared, ठीक है. In case of a company, the report is addressed to the shareholders of the company. So कैसे आएगा? टाइटल इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट आ गया, और क्या आ गया? टू द मेंबर्स ऑफ हॉट मील्स लिमिटेड इन दिस केस. एंड इन केस ऑफ अ पार्टनर, तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट टाइटल तो सेम रहेगा, टू द पार्टनर्स ऑफ रिचा इंटरनेशनल, ठीक है. तो देखें यहां पर कैसे है. सो प्रैक्टिकली कैसे होता है, लेट अस हैव अ लुक. सो टाइटल तो आएगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है. एंड देन टू द मेंबर्स ऑफ, नीचे कंपनी का नेम आ जाएगा. इज इट क्लियर? हितेश, इट विल बी ऑल, है ना, टू द पार्टनर्स, ठीक है. वर्किंग तो सबको जानना है ना कैसे हो रही है, पार्टनरशिप फर्म का भी या कंपनी का भी, ठीक है. इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट? ओपिनियन. बहुत इंटरेस्टिंग है ओपिनियन पैराग्राफ ना. सो ऑडिटर्स ओपिनियन. Third is what? Auditor's opinion. So the first section of the auditor's report shall include the auditor's opinion and shall have the heading opinion. Simple है. अभी आपने देखा भी कि opinion आ रहा था. The heading was what? Opinion. Now students, this opinion paragraph as such is divided into two parts, है ना. So in the first part, the auditor will give an introduction whereby auditor will be specifically mentioning that we or I have audited the financial statements of so and so company consisting of balance sheet as on this date, consisting of the P&L, cash flow, एंड स्पेसिफिकली मेंशन कि मैंने नोट्स टू अकाउंट्स को भी एग्जामिन किया है, मैंने एक्सप्लेनेशंस को भी एग्जामिन किया है, ठीक है. सो ऑडिटर ने क्या दिया? पहले इंट्रोडक्शन,
that he has audited, पहले तो बता दिया कि भाई मैंने ऑडिट किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सो एंड सो कंपनी, इस कंपनी का किया है, कंप्राइजिंग ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन, मतलब डेट भी बता दिया एंड ये भी बता दिया कि बैलेंस शीट को किया है, नोट्स टू अकाउंट्स को किया है, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को किया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में इन द ओपिनियन ना दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, फर्स्ट इज व्हाट एन इंट्रोडक्शन एंड देन द सेकंड इज द ओपिनियन। ठीक है, तो पहले तो हमने बता दिया कि हमने ऑडिट किया है, ठीक है, एंड बाद में second half of this opinion paragraph it will consist of what, the actual opinion, and is opinion mein here the auditor will be saying that the financial statement reflect a true and fair view, है ना। तो पढ़ते हैं, then we will have a look at the actual report. So the opinion section of the auditor's report shall also, अब वो क्या बताएगा, identify the entity whose financial statement have been audited. So we have audited the financial statement of XYZ Limited. Identify the entity XYZ Limited. ठीक है, state the financial statements have been audited. तो पहले स्टार्ट ही कैसे हो रहा है, we have audited, है ना। तो हम क्या बता रहे हैं कि देखो हमने ऑडिट कर दिया है। Identify the title of each statement comprising the financial statement. So we have audited the financial statement of XYZ Limited comprising of the balance sheet as on this date, comprising of the profit and loss account and the cash flow. ठीक है, then it says refer to the notes including the summary of significant accounting policies. So auditor will also mention that we have also audited what, the notes including the summary of the significant accounting policies, and then it says specify the date of or the period covered by each financial statement comprising the financial statement. So basically यहाँ पे I can say this is a kind of introduction ना, ये इंट्रोडक्शन अब आप एग्जाम में मत लिखना, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ही तो है ना। ठीक है, सो नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द प्रैक्टिकल, द एक्चुअल ऑडिट रिपोर्ट। देखो अब वहां पर जो वो आपका पिरामिड बनाया हुआ है, इट हैज गॉट हाउ मेनी पॉइंट्स, 5। ठीक है, तो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑडिटेड, तो वी हैव ऑडिटेड ये फर्स्ट हो गया। financial statement of, specify the entity, the company is mentioned, which comprise of balance sheet, statement of profit and loss and statement of changes in equity and cash flow. तो ये क्या हो गया आपका थर्ड, है ना। and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory notes, ये हो गया फोर्थ। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज एट 31 मार्च 2021, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफाई द पीरियड एंड कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड। तो दिस तो यू ऑल नो दैट बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, है ना। P&L कैश फ्लो चेंजेस ऑफ स्टेटमेंट इन इक्विटी इज फॉर द पीरियड एंडिंग। ठीक है, सो देखा यहाँ पे क्या आ रहा है, this is an introduction consisting of 5 points. ठीक है, now let us have a look at the next section of the opinion paragraph. In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, कौन देगा explanation, management, those charged with governance, the aforesaid Ind AS financial statement, aforesaid मतलब ये वाले जो financial statements का हमने reference दिया है, give the information required by the Companies Act in the manner so required, and now very important, give a true and fair view in conformity with the principles generally accepted in India, है ना, that is as per the applicable FRF. ठीक है, just a minute, of the state of affairs of the company as on 31st March 2021, its losses, the changes in equity and its cash flow for the year ended on that date. तो पहले तो हमने इंट्रोडक्शन दिया और बाद में हमने ओपिनियन दिया, and see this is the language which is exactly used. This is an actual audit report. So give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India. Clear है?
ठीक है. So let me just take you through the module now. Oh, sorry, it was there. So the opinion section will have this, all these 5 points. Then it will have an unmodified opinion. Why unmodified? Because we are abhi discussing what SA 700, and we all know SA 700 में unmodified opinion का reference है. So when expressing an unmodified opinion on the financial statement, the auditor's opinion shall, unless otherwise required by law, अगर law का कुछ requirement है, right? So the auditor will consider that requirement. So the auditor shall use one of the following phrases which are regarded as being equivalent. So auditor may use this or this. So it is connected by or. In our opinion, the accompanying financial statement present fairly in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework. तो applicable financial reporting framework को mention कर देंगे. जैसे यहाँ पर क्या था? Generally accepted principles of accounting. ठीक है? Then, or it can be, in our opinion, the accompanying financial statement give a true and fair view in accordance with the applicable financial reporting framework. और applicable financial reporting framework को कैसे mention किया हुआ था? Accounting principle generally accepted in India. ठीक है? So the phrases present fairly in all material respects or given true view, एक ही बात है. Anything can be used by the auditor. Now very very important, देखो when the auditor expresses an unmodified opinion, तो मैंने क्या बताया था? Unmodified क्या है? Unconditional, unrestricted. So when the auditor is giving an unmodified opinion, तो कोई condition मत लगा देना. Why? Because then it will become a modified opinion जो आप SA 705 में दोगे. यहाँ पर तो आप क्या बोल रहे हो? सब बढ़िया है. तो ऐसे मत बोलना सब बढ़िया है लेकिन ये अच्छा नहीं है. लेकिन नहीं लगाना है. ठीक है? So when the auditor expresses an unmodified opinion, it is not appropriate to use phrases such as with the foregoing explanation or subject to in relation to the opinion, as these suggest a conditional opinion or weakening or modification of opinion. अगर subject to लिख दोगे या with the foregoing explanation लिख दोगे, तो what will it mean? It will mean that some condition is been attached. But unmodified का तो मतलब ही क्या होता है? Unconditional. ठीक है? So I hope that the opinion paragraph is clear to you. So the first section of the auditor's opinion of the auditor's report will be what? Auditor's opinion with the heading of what? Opinion. तो heading opinion ही है. ठीक है? Let us have a look here. ठीक है? अब यहां पर हेडिंग क्या दिया हुआ है? देखो ओपिनियन लिखा है ना, तो जो ऐसे में मेंशन है वो ही लिखा है, ऑडिटर्स ओपिनियन नहीं लिखा है. हेडिंग क्या है आपका? ओपिनियन. ठीक है? एंड देन द फर्स्ट सेक्शन शैल स्टेट व्हाट? दैट वी हैव ऑडिटेड, है ना? ये लिखना है. आइडेंटिफाई द एंटिटी हु स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड, स्टेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड. तभी तो हम लिखते हैं ना वी हैव ऑडिटेड. इससे क्या है? इससे ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाता है. आइडेंटिफाई द टाइटल, देन नोट्स को भी बताओ एंड द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बताओ. एंड अनमॉडिफाइड ओपिनियन के लिए ये वाला लैंग्वेज कुछ भी यूज कर सकते हैं एंड ये वाला लैंग्वेज मत यूज करना. सिंपल है. ठीक है? So I hope the three elements, that is starting from title, independent auditor's report, addressee, shareholders in case of a company, partners in case of a partnership firm, ठीक है? And opinion, जहां पर हमने देखा कि 2 sections में आएगा. पहले a kind of introduction and then the opinion is clear to you. Quickly बताओ, then we will take a break. पर पहले just send me your replies. Yes, absolutely correct. Shriram is saying in case of the sole proprietorship to 2 sole proprietor. Trust के केस में trustees को होगा. ठीक है, correct. So कार्तिक, अगर ये specifically बैंक ने बोला है कि आप ऐसे ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करवा के लाओ, ऐसे ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, तो स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए ना. वैसे तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं. बट इन केस वहां पर ऑडिट रिपोर्ट देना है तो ऑब्वियसली जिसके लिए ऑडिट रिपोर्ट आपने बनाया है उसको आप एड्रेस करोगे. So Karthik, I hope your doubt is clear. ठीक है? So students, we will do one thing here. We will take a
quick break of 10 minutes, and after that we will study all the rest elements of audit report. Okay? So a quick break of 10 minutes.
Okay. So students, I hope you all are back. Pooja is back. She has already mentioned. So, Hiral is saying what is meant by foregoing explanation. So, foregoing means previously stated explanation, है ना? With whatever is stated earlier. Foregoing, preceding, earlier, है ना? जो भी पहले लिखा है, subject to that. ठीक है, हिरल? So, Nilabjo has a query with respect to compliance framework. So, relating to this. So it basically says that compliance to karna hai na, to the rules, but does not contain the acknowledgements as 1 and 2. So whatever is mentioned here in fair presentation framework, कि जो fair presentation framework allow करता है ना 1 and 2 में, वो compliance framework allow नहीं करता. So that is why it is mentioned, but does not contain the acknowledgements in 1 and 2 above. So is it clear, Nilabjo? Is your doubt, Hiral, is your doubt clear? Both of you, please reply. So other matter paragraph, we will be doing, whose query is this? Manoj, when we will do essay 706. So Nilabjo, Neeraj, Manoj, are your doubts clear? Okay. Now the next paragraph. So let us have a look at the actual report. It is what? Basis for opinion. Basis for opinion. Okay. So just try to understand why this paragraph and where is this paragraph mentioned in the auditor's report. Okay. So see, the basis for opinion paragraph will directly follow the opinion section with the heading what? Basis for opinion. तो डायरेक्टली फॉलो करेगा ओपिनियन के बाद डायरेक्टली क्या आएगा? बेसिस फॉर ओपिनियन. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, basis for opinion, as the name suggests, यहाँ पर what auditor is trying to convey is that the opinion that has been given in the above paragraph is based on certain things. ऐसे ही हवा में कोई opinion नहीं दे दिया है ना. It is based on certain things, है ना. What are those certain things? There are 4 points which we will be discussing in detail. ठीक है. तो quickly बताओ, please do not look at the module, है ना. I'll change this file to this. What according to you can be the base of auditor's opinion? So I told you there are 4 bases. ठीक है. So on what basis the auditor is giving the opinion? क्या follow कर auditor ने audit किया and opinion दिया? Or a hint that in accordance to what the audit has been conducted. In accordance to what the audit has been conducted. So if अच्छा ठीक है, एक और हिंट, अगर मैनेजमेंट से पूछते हैं ना कि मैनेजमेंट आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाए, तो मैनेजमेंट विल से व्हाट? द एप्लीकेबल एफआरएफ, है ना. एंड हियर इफ वी आस्क कि ऑडिटर आपने ये ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाया, तो यस, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. So auditor will say that the audit was conducted in accordance with SAs. ऐसा नहीं है कि कुछ भी करके रिपोर्ट दे दिया है, कुछ भी करके ओपिनियन दे दिया है. जो ऑडिटर जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में मेंशन्ड है, we have done all that. ठीक है. And in the second point, the auditor will say that more specifically, whatever responsibilities of an auditor are given under the SAs, we have complied with all those, and then only we have given the opinion.
ठीक है students, if you remember, in each and every essay that you have covered so far, the first topic or the second topic that is almost there in all essays is responsibilities of the auditor, है ना, कि ये ऑडिटर क्या बताता है. तो वो लैंग्वेज कैसी होती है, this essay deals with the auditor's responsibility, let's say, to send external confirmation, है ना, if we talk about essay 505, or let's say with respect to essay 580, this essay deals with auditor's responsibility to obtain written representation, है ना. तो responsibilities, तो हम क्या बता रहे हैं, the auditor is telling the users of the financial statement कि ये opinion ऐसे नहीं दे दिया है, कुछ basis है इसका. पहले तो हमने standards follow किए हैं. The audit was conducted in accordance with the standards on auditing, and then we are saying that please refer to auditor's responsibility, which we have mentioned separately in another section. If you remember, we have seen that there is a separate section in the auditor's report. This one, auditor's responsibility for the audit of financial statement, है ना. तो auditor is writing what, that you may refer to that section. वहां पर आपको पता चल जाएगा that we have fulfilled all our responsibilities. ठीक है, अभी डिटेल में इसको देखेंगे. ठीक है. Then the third point here, auditor wants to say that my opinion is not based on what management was saying. It is not subordinate to the wishes of management. My opinion is independent. Basis है ना यार, कि I am independent. Independently मैंने एक opinion दिया है. My opinion is not subordinate to the wishes of the management, कि management ने ऐसा कहा. Like my opinion is not influenced by the wishes of the management, है ना. So another base, a very important base is what, that it is an independent examination. Clear? And that I have complied with all relevant ethical requirements that I am supposed to comply with. So ethical requirement कहाँ से आती है, ICAI से आता है, code of ethics है for the members, for the auditors, है ना. So I have complied with the relevant ethical requirements. So basically क्या बता रहा है ऑडिटर, कि ऐसे नहीं ओपिनियन दे दिया, ऑडिट मैंने जो किया है as per standards on auditing किया. Responsibilities जो है, you can refer to the auditor's responsibility section. I've complied with all the responsibilities and I've done this audit independently. Independently I mean that I am independent and I've complied with the relevant ethical requirement. And last but not the least, this opinion is based on sufficient appropriate audit evidence, that I have obtained what, sufficient appropriate audit evidence. तो users of the financial statement को हम क्या बता रहे हैं कि what is the basis. ऐसे थोड़े ना कुछ भी opinion दे दिया है, there is a basis for the opinion ना. तो देखो क्या लिखा है. So first of all, it will directly follow the opinion section. ठीक है. Then with the heading basis of opinion, so it is mentioned that the auditor's report shall also include a section directly following the opinion section with the heading basis of opinion. That means that section will state that the audit was conducted in accordance with standards on auditing. Refers to the section of the auditor's report that describes the auditor's responsibility under the essay. So I can say, in order to learn, you can see कि ये दोनों points essay से related है ना, कि standards on auditing follow किए हैं and the responsibilities under the essays, those are mentioned in a section of auditor's responsibility and the reference is made here. ठीक है, कैसे करते हैं अभी हम actual report देखेंगे. Basis of opinion, that includes a statement that auditor is independent of the entity in accordance with the relevant ethical requirements relating to the audit and has fulfilled other ethical responsibilities in accordance with these requirements. ऐसा नहीं है कि हम independent नहीं थे, ऐसा नहीं है कि जो management बोल रहा था हम वही सब कर रहे थे. We were independent. We have complied with the relevant ethical requirements. And last, it states whether the auditor believes that audit evidence the auditor has obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for auditor's opinion. Thus, basis of opinion paragraph section
it is section provides important context about the auditor's opinion. ठीक है, तो देखो 4 points क्या है. फर्स्ट पॉइंट क्या है कि स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कंडक्ट किया है. सेकंड पॉइंट क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर मेंशन्ड अंडर standards हमने comply किया है, and you may refer to that particular section in our audit report. Third point says that we were independent and relevant ethical requirements meet किए. And fourth point says that sufficient appropriate audit evidence has been obtained. तो देखो आप कैसे लिखेंगे. 4 points है ना, तो देखें यहाँ पर कैसे है. 4 points होने चाहिए. So basis of opinion. We conducted our audit in accordance with standards of auditing specified under section 143 subsection 10 of the Companies Act. अब देखो 143 subsection 10 तो सबको आना चाहिए. बताओ. ठीक है. Then our responsibilities under those standards, those मतलब ये वाले जो standards हैं, are further described in the auditor's responsibilities for the audit of financial statements section in our report. मतलब हम क्या कह रहे हैं basis of opinion में कि जो ये वाला section है ना, इसको पढ़ लो. Auditor's responsibility for the audit of financial statement. ठीक है. ठीक है. Then so this is the second point है ना. देखो exactly same है ना. We are independent. बहुत क्लियरली कह रहे हैं. पहले कहाँ किया बोला वी आर इंडिपेंडेंट. देखो पहले हमने यहीं पर फर्स्ट वर्ड ही हमारा ऑडिटर्स रिपोर्ट का क्या है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. और यहाँ पर हम दोबारा बता रहे हैं दैट आवर ओपिनियन इज बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन. ठीक है. सो वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit as specified under provisions of Companies Act 2013 and rules made therein. And we have complied with our ethical responsibilities in accordance with the ethical requirements and code of ethics. तो ये क्या हो गया third. And that we believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for opinion paragraph. तो बताओ, if I ask you to draft a basis of opinion paragraph with respect to XYZ Limited, where the auditor is giving an unmodified opinion, will you be able to do that? Obviously yes. Why? Because you know that it consists of 4 points और एक set format है ना, जो which has been mentioned in essay 700. तो बेसिकली हम क्या बताते हैं कि essay फॉलो किए हैं हमने, उसमें जो स्पेसिफिकली ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो भी फॉलो किया. यू मे मेंशन टू द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ. जो वी वर इंडिपेंडेंट, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, कोड ऑफ एथिक्स ऑफ इशूड बाय कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय ICAI and the ethical requirements under the provisions of Companies Act 2013 or rules have been complied with. And we believe that audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide the basis for our opinion. कुछ opinion दे रहे हैं तो कुछ evidence भी तो होगा ना. Sufficient appropriate होता है audit evidence, that you all know because you all have done essay 500. बताओ समझ आया. And for all those who were saying, ma'am, in exam how will we get a question? So you may get a question ना कि basis of opinion paragraph draft करो ना A Limited के लिए where unmodified opinion is given. So let's see illustration 4 है ना. And students in the module now, after each of the element of audit report, illustrations are given and they beautifully reflect the element that has been discussed है ना. तो जैसे यहाँ पर जब हमने टाइटल डिस्कस किया तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है, तो प्लीज गो थ्रू ऑल दिस एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन. जब हमने एड्रेस डिस्कस किया तो देखो यहाँ पर है कि मेंबर्स को करना है या इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को करना है. जब ऑडिटर्स ओपिनियन किया तो यहाँ पर भी एक इलस्ट्रेशन है कि कैसे एक्चुअल में आएगा. एंड देन व्हेन वी आर डूइंग दिस बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ यहाँ पर भी मेंशन है. सो लेट अस जस्ट रीड दिस पॉइंट बिकॉज हु हैज रेज्ड दिस concern about question, Bhardwaj. So Messrs. Kite Wright and Associates are the statutory auditor of Prime Deluxe Limited for financial year 2021. At the time of finalizing the audit report, one of the engagement team members, Mr. Robin, asked the engagement partner, CA Kite, as to what all should be included in basis of opinion paragraph. The engagement partner, CA Kite, explained the team in detail and asked Mr. Robin to draft such a section for the auditor's report. So help Mr. Robin to draft basis of opinion section. And देखो ये exactly same है ना जो हमने पढ़ा अभी. ठीक है.
Students, tell me, is it clear? So try to follow the format which is given. ठीक है नीलाब्जो? ठीक है, is it clear, students? Shall we proceed further with the fifth point, which is related to going concern? Quickly tell me, where have you done, what is the essay dealing with going concern? बताओ, कौन सा essay है? I'm assuming that with respect to the reporting of essay of going concern with respect to essay 570, relating to going concern, you all have done that in detail in chapter number 3. So I'm assuming that you all are aware about the reporting requirements. Okay? So essay 700 क्या बोलता है? So the next heading is what? Material uncertainty relating to going concern. So the next heading relates to what? Going concern. ठीक है? So it basically says, देखो गोइंग कंसर्न एसेस करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे हम कहते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। मेरे को बताओ, गोइंग कंसर्न बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। तो गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं, पहले असेस करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर विल सी वेदर द मैनेजमेंट्स यूज ऑफ गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट और नॉट, कि मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। ऐसा तो नहीं है दैट देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द entity's ability to continue as a going concern. ऐसा तो नहीं है कि there is some indicators, है ना? You all have done this in essay 570 ना, that there are operating financial or other indicators जो मैनेजमेंट ने कंसीडर नहीं किया है, though the financial statements were supposed to be prepared on liquidation basis, but मैनेजमेंट ने going concern basis पे बना दिया है। So first and foremost तो कौन assess करेगा? मैनेजमेंट। तभी तो they will prepare the financial statement based on going concern, है ना? अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट बेस्ड ऑन लिक्विडेशन बेसिस, है ना? सो इट सेज गोइंग कंसर्न में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? इट इज अ फंडामेंटल assumption that the entity is a going concern and will continue its operation for the foreseeable future. ठीक है? That the assets will be realized and the company will be able to discharge all its liability and the recording is done in such a way that is on going concern basis. ठीक है? So auditor को क्या करना है? Auditor needs to obtain a sufficient or appropriate audit evidence to conclude whether the management's use of going concern basis of accounting is appropriate or not. So the auditor shall evaluate whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained regarding and shall conclude on the appropriateness of management's use of going concern basis of accounting in the preparation of financial statement. ठीक है? And auditor will see कि कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है ना? ऐसे 570 में सब किया हुआ है ना? Based on the audit evidence obtained, the auditor shall conclude whether in auditor's judgment a material uncertainty exists related to events or conditions that individually or collectively may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. याद है ना सबको? और अगर कोई material uncertainty है, that means when the magnitude मतलब कितना impact है ना, of that potential impact and likelihood of occurrence is such that in auditor's judgment it is appropriate to disclose the nature and implications of the uncertainty. ठीक है? So auditor will see कि कोई disclosure requirement तो नहीं चाहिए, ठीक है? Be it a fair presentation framework or be it a compliance framework. Fair presentation framework में additional reporting क्यों करेंगे? Because it will lead to what? Fair presentation. And with respect to going concern, fair presentation with respect to compliance framework, if there is a requirement with respect to going concern, तो उससे related compliance in the financial statement हुआ है या नहीं? यहाँ पर हमें फेयर प्रेजेंटेशन से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क में? दैट व्हाटएवर हैज बीन मेंशन्ड इन द फ्रेमवर्क को फॉलो किया है या नहीं। अगर फ्रेमवर्क कहता है
कंप्लायंस फ्रेमवर्क में दैट गोइंग कंसर्न के ऊपर ऐसे ट्रीटमेंट होना चाहिए. सो वेदर दैट हैज बीन डन और नॉट इन ऑर्डर टू बी श्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मिसलीडिंग. ठीक है. सो यहाँ पर बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं दैट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मैनेजमेंट का. ऑडिटर क्या करेगा फिर? ऑडिटर विल सी वेदर द मैनेजमेंट्स यूज ऑफ going concern is appropriate or not. And student, with respect to reporting part, है ना, you all have done that in detail in chapter number 3 when you have done essay 570. I'm assuming that you all are clear with that reporting. If there is any doubt, you can always tell me. We can take that up in the next session. ठीक है? Is it clear? So no realistic alternative means, Hiral, where is it mentioned? हाँ, तो यहाँ पर ना, to liquidate the entity or to cease operations or has no realistic alternate but to do so. मतलब कोई alternative नहीं है, but ये करना ही पड़ेगा, operation cease करने ही पड़ेंगे. Hiral, is it clear? No realistic, कोई भी practical alternative नहीं है, but to do so means but to do so. लेकिन क्या करना पड़ेगा? Cease करने पड़ेंगे, operation cease मतलब stop करने पड़ेंगे. ठीक है? ठीक है. Now the next heading is what? Key audit matters. And students, with respect to key audit matters, I've already told you that there is a separate essay, essay 701. So this I'll be taking up in the next session when we will do key audit matters. Okay. So let us have a look at the. Okay. So with respect to this paragraph, now I'm not discussing assets because you all have done this in detail in your chapter number 3. Okay. So key audit matters क्या होते हैं? So in key audit matters now, when we will discuss, you will see that the auditor will first define. Shareholders को पहले बताएंगे कि key audit matters होते क्या हैं, and then they will mention कि according to them what matters are key audit matter with respect to the financial statements that they have audited. तो key audit matters हम कब discuss करेंगे? When we will do essay 701. ठीक है? Now let us move on to the 7th heading, which is what? Responsibilities for the financial statement. बताओ कौन होता है responsible for the financial statement? ये वाला paragraph quickly करेंगे because I have repeated this point n number of times. Responsibilities for the financial statement. So there is a heading, if you remember, responsibility of management and those charged with governance for financial statement. So management and those charged with governance. So where management and those charged with governance same है, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? Responsibilities of management for financial statement. But where the management and those charged with governance is different, आप क्या लिखोगे? Responsibility for management and those charged with governance for financial statement. अब management कौन होता है and those charged with governance? I have taken this topic in my earlier sessions also and in other chapters also, which I have not taken. ये topic definitely discuss हुआ होगा, so I'm not repeating it here again. ठीक है? So I've told you that in small organization where management those charged with governance same ही होते हैं. जो manager है वही manage भी कर रहा है, like sole proprietorship, है ना? He is also supervising, directing. तो वहां पर it will be addressed to management. जहां पर management and those charged with governance में difference है. Give me an example of those charged with governance जो हमने chapter number 10 में discuss किया था. Quickly send in your replies. है ना? उसके लिए तो बहुत दूर नहीं जाना है, चैप्टर नंबर 10 में ही जाना है. In the last 3-4 sessions that we have discussed. बताओ.
एग्जाम्पल दो मेरे को, दो स्टार्ट विद गवर्नेंस का जो चैप्टर नंबर 10 में स्पेसिफिकली डिस्कस किया था। सुनील आप जो की ऑडिट मैटर्स का रिपोर्टिंग मैंडेटरी है या नहीं, तो दैट वी विल सी इन एसए 701। लिस्टेड एंटिटीज के लिए मैंडेटरी है, ठीक है, एवरी ईयर मैंडेटरी है, ठीक है, 701 में करेंगे। सो ऑडिट कमिटी, रिमेंबर कार्तिक इज करेक्ट, है ना? सो where there is a bifurcation of management, those charged with governance, so it will be responsibility of management and those charged with governance for financial statement. अब quickly मेरे को बताओ, मैनेजमेंट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? 3 पॉइंट्स हैं, तीनों हमने आज डिस्कस किए हैं, बताओ क्विकली, 1 2 3 फास्ट। आई मीन टू से इतना सिंपल है कि आप क्विकली बता सकते हो कि 1 फर्स्ट पॉइंट इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस। Management is responsible for. So basically, when we are giving our audit report, at that time the auditor is telling the shareholders or the users of the audited financial statement that, see, with respect to these three work, we haven't done anything. It is the responsibility of the management. वहीं पे क्लियर कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं? So yes, Siddharth is saying financial statements बनाना, Hitesh is saying implementation of internal control. थर्ड कौन बताएगा? जो जस्ट अभी डिस्कस किया। Quickly send in your reply. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं गोइंग कंसर्न बेसिस पे, तो सबसे पहले तो गोइंग कंसर्न भी तो असेस करना मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इन ऑर्डर टू असेस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट्स यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, ठीक है? तो सिंपल, सो दीज आर द 3 पॉइंट्स जो हम लिख के बता देंगे किसको, वी विल मेंशन इट टू द शेयर होल्डर्स इन आवर ऑडिट रिपोर्ट कि देखो भाई ये वाला काम हमने नहीं किया, ये वाला काम किसने किया है? मैनेजमेंट ने। सो बेसिकली वी आर टेलिंग द शेयर होल्डर्स दैट दिस इज द बेसिस, दिस इज द प्रीमाइस ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टेड। ऑडिट कंडक्ट ही स्टार्ट ऐसे होता है ना कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा गोइंग कंसर्न बेसिस पे, और या मैनेजमेंट पहले देखेगा गोइंग कंसर्न है या नहीं। Based on that assessment, management will make financial statement. Management will implement the internal control. तो users of को या shareholders को हम specifically यहाँ लिख के बता रहे हैं that, see, this is the base on which the audit is conducted. सिंपल है ना? क्लियर कर रहे हैं पहले ही कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप वहां पे पढ़ लेना, सिंपल है। सो द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन विद हेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल डिस्क्राइब मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, आई टोल्ड यू 3 बातें हैं, 2 बातें यहाँ पे लिखी गई है, 1 बात यहाँ लिखी गई है। प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF एंड फॉर सच इंटरनल कंट्रोल। तो preparation of financial statement and internal control, as management determines, is necessary to enable the preparation of financial statement that are free from material misstatement whether due to fraud and error. Internal control किस लिए लगाते हैं? To enable the preparation of financial statement that are free from material misstatement whether due to fraud or error. And thirdly, so I can say thirdly, here B point is assessing the entity's ability to continue as a going concern and whether the use of going concern basis is appropriate, as well as disclosing, if applicable, matters relating to going concern. तो पहले ही बता दिया कि ये कौन देख रहा है? मैनेजमेंट देख रहा है, ठीक है? और इससे क्या होगा? देखो, ऐसे 200 explains the premise. Premise is what? Basis. Relating to responsibilities of management and where appropriate, those charged with governance on which an audit is in accordance with SCs is conducted. Management and where appropriate TCWG accept responsibility for preparation of financial statement. Management also accepts responsibility for such internal control. The description of management responsibility in the auditors auditor's report includes reference to both responsibility as it helps to explain the users the premise मैंने बताया basis on which auditor is conducted, है ना? तो ये मत पूछना कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों बतानी है, बिकॉज शेयर होल्डर्स को बताना है ना कि देखो इस बेसिस पे ऑडिट होता है ना? एंड इफ रिमेंबर ऐसे 210 में एंगेजमेंट लेटर लेते हैं ना ऑडिटर्स, एंगेजमेंट लेटर साइन होता है ना, सो ऐसे 210 रिक्वायर्स द ऑडिटर to agree management responsibilities in the engagement letter or other suitable form of written agreement.
है ना. मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन भी तो हम ले लेते हैं ना, दैट मैनेजमेंट टेल अस वेदर यू हैव फुलफिल्ड ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नॉट, है ना. देन दिस पैराग्राफ इट बेसिकली सेज कि जहां पर TCWG है तो वहां पर आप दोज चार्ज विद गवर्नेंस को भी रेफर करोगे, अदरवाइज यू विल मेक रेफरेंस ऑफ व्हाट मैनेजमेंट. ठीक है. सो अदरवाइज क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सिंपल है. ठीक है. सो लेट अस सी दिस पॉइंट फ्रॉम हियर ओनली. Diamond Shine and Company is a company engaged in manufacture of detergent. Messrs. Bright and Associates are the statutory auditors of the company. Explain how the paragraph relating to management's responsibility will come. तो यहाँ पर सिर्फ मैनेजमेंट की बात बोली है ना, तो मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर कंसोलिडेटेड होते तो यहाँ कंसोलिडेटेड आ जाता. ठीक है. सो अब तीन बातें हैं कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं, मैनेजमेंट ही इंटरनल कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मैनेजमेंट ही गोइंग कंसर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो देखो, द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स स्टेटेड इन सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 with respect to preparation of the standalone financial statement that give a true and fair view, financial performance, cash flow, सब कुछ किसने किया, मैनेजमेंट ने. ठीक है. दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो इंक्लूड्स मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. ये भी मैनेजमेंट को देखना है. ठीक है. It also includes design, implementation and maintenance of adequate internal financial control that were operating effectively for ensuring the accuracy, completeness of accounting records relevant to the preparation and presentation of financial statement that gave a true and fair view. ये सारा काम कौन कर रहा है, मैनेजमेंट. And last, see, in preparing, so this was the first point, internal control ka second point, and this is the third point. In preparing the financial statement, management is responsible for assessing the company's ability to continue as a going concern, disclosing as applicable matters related to going concern, and using going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the company or cease operations or has no realistic alternative but to do so. मतलब कि और कोई ऑप्शन नहीं है but liquidate करना ही पड़ेगा. The board of directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process. ठीक है. So is it clear कि मैनेजमेंट हियर एंड those charged with governance सेम है, तो दैट इज वाई मैनेजमेंट मेंशन किया हुआ है हमने. ठीक है. बताओ, अगर सेपरेट ऑडिट कमिटी भी होती, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस फॉर्म कर रहे होते, तो क्या आता, मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सी स्टूडेंट्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैसे हो सकता है मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, आप बताओ मुझे. वो थोड़ी ना हो जाएगा. CAG is a separate body, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. एंड जिसका भी ये डाउट है ना, प्लीज रेफर टू चैप्टर 10. वी हैव डिस्कस्ड दैट कॉन्सेप्ट इन डिटेल देयर. ठीक है. इज इट क्लियर? ठीक है. सो द 7th पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर. नाउ लेट अस कम टू पॉइंट नंबर 8. अब मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया, तो शेयर होल्डर्स बोलेंगे ना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बता दो. सो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब देखो ऊपर क्या था, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब यहाँ पर क्या है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट. यहाँ पर भी स्पेसिफिकली बता दिया कि ऑडिट के लिए है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस. ठीक है. नाउ दिस टॉपिक ना, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस. देखने में बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि इसमें क्या क्या है, बट अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, इट इज वेरी सिंपल. और जो वट एवर रिविजन वी हैव डन एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन ना, जहां वी हैव डिस्कस्ड ऑल द एसेज, अब यहाँ पर वो सब आएगा. बताओ क्यों, मैं बताती हूँ. देखो, when we have discussed basis of opinion paragraph, यहाँ पर हमने क्या बोला था, refer to the section of the auditor's report that describes the auditor's responsibility under the essays. तो अब जब हम बता रहे हैं कि ऑडिटर ने कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दी एसे फॉलो किया है, तो जितने भी एसे अभी तक लगाए हैं वही सब तो आएंगे कि एसे 260 में हमने ये कर दिया, एसे 315 में हमने ये कर दिया, एसे 330 में हमने ये कर दिया, एसे 500 में ये कर दिया. यही सब तो आएगा ना. सिंपल. ठीक है. बट इन ऑर्डर टू लर्न इट, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट, इसको
स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आई टोल्ड यू दैट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो क्या हेडिंग होगा, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन, दैट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल स्टेट, 3 बातें बोलनी है, ठीक है। सेकेंड सेक्शन, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल फर्दर स्टेट, तो ऊपर क्या था, शैल स्टेट कि ये बातें बोलनी है, शैल फर्दर स्टेट ये भी बोलनी है, एंड थर्ड क्या बोलता है, the auditor's responsibility for the audit of financial statement of the auditor's report also shall state। तो 3 सेक्शंस में है, पर हर जगह क्या है, डिफरेंट बातें हैं कि there are a number of responsibilities which auditor has fulfilled, which is divided into 3 sections। अभी किसने डिवाइड किया है, ऐसे 700 ने, तो वैसे ही फॉलो करना है, and it is the same way in which the companies are actually following, like the companies are actually following this format only। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक्चुअल में, so see auditors responsibility for the audit of financial statement, है ना। तो यहाँ पर ये शैल स्टेट वाला आया है, ये शैल फर्दर स्टेट वाला है सारा, ठीक है, एंड ये शैल ऑल्सो स्टेट वाला है, ठीक है। तो लिखना तो एक साथ है, बट इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ऐसे में ऐसे आपको दिया हुआ है दैट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल बी स्टेटेड इन दिस मैनर, ठीक है। सो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको ऐसे डिवाइड किया है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले क्या स्टेट करना है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले द ऑडिटर इज गोइंग टू टेल द शेयर होल्डर्स कि देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिट के, ये बता रहे हैं हम आपको। और क्या ऑब्जेक्टिव होता है, टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। सो सबसे पहले हम शेयर होल्डर्स को कह रहे हैं कि देखो आपको नहीं पता होगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ऑडिटर के, तो हम आपको बता देते हैं द ऑब्जेक्टिव्स आर to obtain reasonable assurance about whether financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud and error, and to issue an auditor's report that includes the auditor's opinion. Simple. So the first paragraph with respect to auditor's responsibility will state the objective of the auditor. So what are the objectives? To obtain a reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud and error. और बस उसके बाद कुछ नहीं करना है ना, to issue an auditor's report that includes the auditor's opinion, ठीक है। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में यहां पर हमने क्या बोला, रीजनेबल एश्योरेंस लेना है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। Next 2 points में the auditor is going to define as to what is meant by reasonable assurance and what is meant by material misstatement. Simple. तो हम ऑडिटर्स क्या बता रहे हैं शेयर होल्डर्स को कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो हम शेयर होल्डर्स को कहते हैं शेयर होल्डर्स सुनो, वो समझने से पहले ना, पहले ये तो समझो कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का, तभी तो आपको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आएगी ना। तो शेयर होल्डर्स कहते हैं ठीक है ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ऑडिटर बोलता है द ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। शेयर होल्डर कहता है रुको, रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, ये भी बता दो। तो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में ऑडिटर विल से दैट रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस एंड नॉट गारंटी, है ना। इनहेरेंट लिमिटेशंस किए हैं ना ऑडिट के, है ना। तो दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू दैट एंड दैट मिसस्टेटमेंट में अराइज फ्रॉम फ्रॉड और एरर, ठीक है। अब इसी के ऊपर थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, देन योर सेक्शन नंबर 1 ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी क्लियर। इसको एक स्टोरी की तरह याद करते हैं ना कि ऑडिटर क्या बोलता है कि शेयर होल्डर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने से पहले ऑब्जेक्टिव्स तो समझ लो ऑडिटर का क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड टू इशू एन ऑडिट रिपोर्ट। तो शेयर होल्डर्स क्या पूछते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस भी बता दो, स्टेटमेंट भी बता दो, ठीक है। सो that reasonable assurance is high level of assurance, but it is not a guarantee that an audit conducted in accordance with essays will always detect a material misstatement when it exists.
सिंपल है. And the C point, it says that misstatements can arise from fraud and error and either. अब material को describe किया गया है यहाँ पे. So you all have done essay 320. वहां पर mention है ना that material can be if it is provided in the definition or description of materiality is given in the applicable FRF, then materiality means that. And if it is not described in the FRF, then the misstatements are considered to be material if individually or in aggregate they could reasonably be expected to influence the economic decisions of the users taken on the basis of these financial statements. For example, shareholder के लिए क्या economic decision होता है, whether to buy the shares, or prospective shareholder के लिए, और existing shareholder के लिए whether to hold the share or sell the share. तो ये क्या हो गया, economic decisions of the users of the financial statement. I've taken the example of shareholder, है ना. So misstatement whether due to fraud and error, material कब होता है, if it satisfies the criteria which is defined in the applicable FRF, and if no such criteria is defined, then if the misstatement whether individually or in aggregate could reasonably be expected to influence the economic decisions of the users taken on the basis of the financial statement. समझ आता है. पहला वाला सेक्शन बताओ क्लियर है. क्लियर से आई मीन लर्निंग भी इजी लग रही है अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ. क्विकली सेंड इन योर रिप्लाईज. Quickly, I need your answers, then only I'll proceed further with auditor's responsibility. Yes, ma'am, learning side by side. Himanshu is saying. Others also, please reply. ठीक है. तो पहले सेक्शन में हमने क्या बोला कि ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले ऑब्जेक्टिव्स तो समझ लो, फिर वो कहते ठीक है फिर रीजनेबल भी समझा दो और मिसस्टेटमेंट भी समझा दो. डन. नाउ सेकंड सेक्शन. अब यहाँ पर all your essays which you all have done so far, ठीक है. So now with respect to section 2, so the auditor's responsibility for the audit of financial statement, section of the auditor shall further state. क्या state करेगा. अब देखो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करना है. तो अब हम शेयर होल्डर्स को बता रहे हैं. स्टेट दैट ऑडिटर एक्सरसाइजेस प्रोफेशनल जजमेंट एंड मेंटेन्स प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. सिंपल है, सिंपल है. अब शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं बताना कि ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो सब कुछ बताएंगे ना कि जाननी है ना, आप चाहते हो ना जानना कि दैट व्हाट आर द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हम बताते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 दैट ऑडिटर एक्सरसाइजेस प्रोफेशनल जजमेंट एंड मेंटेन्स प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. ठीक है. एंड उसके बाद ये वाली डिस्कस करते हैं. डिस्क्राइब द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्रुप ऑडिट. बताओ ये कौन सा एसे है. क्विकली सेंड इन योर रिप्लाई. चैप्टर नंबर 10 में हमने डिस्कस किया था. डिस्क्राइब द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्रुप ऑडिट. ग्रुप ऑडिट मतलब जहां पर यू आर द ऑडिटर ऑफ द कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सब्सिडरीज एसोसिएट का ऑडिटर कोई और है. क्विकली टेल मी. Quickly send in your replies. So SC 600 स्टूडेंट, SC 600 होता है ना, ग्रुप का ऑडिट हो रहा है. ऐसे 299 तो आपका जॉइंट ऑडिट होता है ना. ग्रुप ऑडिट आई टोल्ड यू कि आप कंसोलिडेटेड सी
When SS 600 applies, auditor further describes in the auditor's responsibility paragraph by stating the division of responsibility for the financial information of the entity by indicating the extent to which the financial information of the components is audited by other auditors have been included in the financial information of the entity. Example, the number of division branches audited by other auditors. Yes, using the work of another auditor. Charu, you are correct. Sudhanshu, you are also correct. Nilabju, you are also correct. 699 तो मैंने पढ़ाया ही नहीं. मेघना, you are also correct. ठीक है. So अभी देखते हैं इसको. तो चैप्टर नंबर 1 से हमने क्या बताया कि हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई किया है, हमने प्रोफेशनल जजमेंट लगाया है. चैप्टर नंबर 10 से हम क्या बताते हैं कि अगर ग्रुप ऑडिट है तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू दीज ब्रांचेस और कंपोनेंट्स द अदर ऑडिटर्स हैव डन द ऑडिट. सिंपल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं ना यहीं पे अपनी. ठीक है. So when SS 600 applies, 600 कब apply होता है? Using the work of another auditor. Further describe the auditor's responsibility in group audit engagements by stating the division of responsibility for the financial information of the entity by indicating the extent to which the financial information of the components. तो जहां पर components आ गए, audited by other auditors have been included in the financial information. लेकिन उसके लिए we have not done the audit. ठीक है. Is it clear? Is it clear? ठीक है. Now this part. Describe an audit by stating that auditor's responsibility are. अब हम सब कुछ बताते हैं that हमने क्या क्या किया है. To identify and assess the risk of material misstatement. Quickly tell me कौन सा essay है. Which essay should I mention here and why I am mentioning here the essay number? Just so that you are able to learn and understand. और एक क्विक रिवीजन हो जाएगा कि अभी तक आपने क्या पढ़ा है. क्विकली बताओ. ऐसे हिमांशु इज करेक्ट. Send in your replies. Just a minute. Let me just. So this is essay 315. So we are telling the shareholders that देखो audit में ना we need to identify and assess the risk of material misstatement in terms of essay 315 that we have done. To obtain an understanding of internal control system, ये कहाँ पर करते हैं? ये भी essay 315 में करते हैं. This also we have done. To evaluate the appropriateness of accounting policies, to conclude the appropriateness of management use of going concern, ये कहाँ पर करते हो? essay 570 पे. To evaluate the overall presentation structure and content of financial statements, है ना? So ये आप the auditor conducts all these things. Now when you will read this in detail ना, so point number, I'm talking about clause B. Describe an audit by stating that the auditor's responsibility are to identify and assess the risk of material misstatement of financial statement, essay 315 था, whether due to fraud and error, to design and perform audit procedure responsive to those risks, that is essay 330, to obtain audit evidence that is sufficient and appropriate, essay 500. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omission, misrepresentation, override of internal control. SC 214. है ना? समझ आ रहा है? To obtain an understanding of internal control. और वैसे ये कहाँ पर लिखा होता है? Section 143. Remember subsection 3, clause I. Internal financial control के लिए कुछ understanding लेना है ना with respect to the companies to which this requirement is applicable. Remember? Students, remember to evaluate the appropriateness of accounting policies and reasonable of accounting estimates. If you remember today at the beginning of the session, I told you that I'll be making a reference to SS 540, though this is not in detail as such. Okay? To conclude the appropriateness of management's use of going concern, SA 570. And last, whether
when the financial statements are prepared in accordance with the fair presentation framework to evaluate the overall presentation structure and content, कि disclosures ठीक है या नहीं, that achieves the fair presentation. अब हम fair presentation की तो बात कर रहे हैं ना यहाँ पर. End AS your schedule 3. So where fair presentation framework is used, then whether the presentation, the structure, the content, the disclosure is such that it results in fair presentation. Clear? देखो सारी नॉलेज यूज हो गई ना, सारे एसेस की 315, 330, 500, 240, 540, 570, देन सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई, है ना. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाया है नहीं, प्रोफेशनल जजमेंट लगाया है नहीं, चैप्टर 1. एसएस 600 में कौन रिस्पॉन्सिबल है, चैप्टर नंबर 10. क्लियर? ठीक है. सो दिस वाज द सेकंड सेक्शन. ठीक है. नाउ द थर्ड सेक्शन. So it shall further state that auditor communicates with those charged with governance, and today I told you कि communication with those charged with governance कहाँ होता है, essay 260 में, regarding among other matters the planned scope and timing of audit, significant audit findings including any significant deficiencies in the internal control. तो communicating deficiencies of internal control कहाँ होता है, essay 265 में. ठीक है. ठीक है. Then for audit of financial statement of listed entities, state that the auditor provides those charged with governance with a statement that auditor has complied with the relevant ethical requirements regarding independence. देखो independence कितना important है ना, यहाँ पर हम दोबारा से बता रहे हैं ऑडिटर shareholders को that it is our responsibility to tell that those charged with governance that we are independent, that we have complied with all the relevant ethical requirements and we have actually communicated with those charged with governance. And last but not the least, we are telling the shareholders that listed entities may, and in respect of other entities as specified in SS 701, we have mentioned the key audit matter paragraph. A key audit matter paragraph क्या होता है, that we will discuss in the next session. ठीक है. तो यहाँ पर इस वाले section of auditors responsibility में what we are saying that those charged with governance से हमने discuss कर लिया है. Plan, scope, timing, and if in case of any significant deficiencies of internal control, तो वो भी in terms of SA 265 we have discussed with those charged with governance. Further listed entities में where it is mandatory that we as auditors, there is a responsibility on the auditors to discuss with those charged with governance about their independence, the ethical requirements, we have done that. And with respect to listed entities and other entities to which SA 701 is applicable, की ऑडिट मैटर भी हमने कम्युनिकेट कर दिया है. अब मेरे को बताओ, इज इट क्लियर? कोई डाउट है? अ क्विक रीकैप ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो देखो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है. ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑडिट. पहले यहीं पे हेडिंग में ही बता दिया कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है. देखो लॉजिक क्लियर होगा तो अब आपको हेडिंग बाय हार्ट याद है ना, बाय हार्ट लर्न हो गई ना. सो मेनी ऑफ यू आर सेइंग मैम कितना लर्न करना है, क्या लर्न करना है. देखो ना ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैंने क्लियरली बताया कि ऑडिट हम यहीं पे लिख देते हैं कि भाई हम ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. तो देखो फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ शैल स्टेट क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बताना है. ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि रीजनेबल एश्योरेंस है या नहीं, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. एंड अनदर ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑडिट रिपोर्ट देना है. फिर यहाँ पर शेयर होल्डर्स पूछते हैं रीजनेबल एश्योरेंस बता दो, तो हम कहते हैं रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल एश्योरेंस बट नॉट अ गारंटी कि सब दैट but not a guarantee that SS will always detect a material misstatement when it exists. फिर शेयर होल्डर्स पूछते हैं मिसस्टेटमेंट बता दो, तो हम क्या बताते हैं कि मिसस्टेटमेंट फ्रॉड एरर किसी से भी हो सकती है. एंड मटेरियल कब होती है, अगर एफआरएफ में डिफाइंड है तो तब होती है, अगर एफआरएफ में डिफाइंड नहीं है तो द मिसस्टेटमेंट विच इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट इफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देखो समराइज हो गया पॉइंट नंबर 1. बताओ क्लियर है. ठीक है. नाउ
लेट अस डिस्कस पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में अब हम क्या बोलते हैं? पॉइंट नंबर 2 में हम बहुत सारी बातें बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं कि देखो, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल फर्दर स्टेट, क्या स्टेट करेगा? दैट फर्स्ट पॉइंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाया गया है एंड प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई किया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख रही हूं मैं अभी, ऐसे 600 के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देंगे। सेकंड पॉइंट में हम बताते हैं बहुत सारी चीजें, दैट हमने ऐसे 315 के अकॉर्डिंग रिस्क को आइडेंटिफाई एंड असेस किया है, फिर 330 में उसको रिस्पॉन्ड किया है, 500 में हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया है। फिर फ्रॉड से रिलेटेड क्या बताते हैं? दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड इज हाई, है ना, रिमेंबर। देन हम क्या बताते हैं? दैट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं, दैट वी हैव ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। फिर हम बताते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज को भी हमने समझा है, एंड 540 में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स भी समझे हैं। एंड देन हम फिर क्या बताते हैं कि 570 एसए भी हमने कंसीडर किया है, एंड वी हैव आल्सो कंसीडर व्हाट द प्रेजेंटेशन, द स्ट्रक्चर एंड द content of the financial statement along with the disclosure in case of a fair presentation framework। ठीक है, सो ये फर्स्ट हो गया आपका, ये आपका सेकंड हो गया, एंड थर्ड वाला जो मेन सब हेड है, ये कैसे स्टार्ट होता है? इट शैल ऑल्सो शैल स्टेट, क्या स्टेट करना है? सिंपल है बहुत, जस्ट अ मिनट। क्या स्टेट करेगा? 3 बातें, दैट 260 में प्लस 265 में हमने 2 स्टार विद गवर्नेंस को बता दिया है। ठीक है, 260 में क्या बताते हैं? दैट वी हैव डिस्कस द प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग। ठीक है, 265 में द डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। देन अगेन हम कहते हैं 260 में जो 2 स्टार विद गवर्नेंस को हमको इंडिपेंडेंस और रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स का कम्युनिकेशन करना था, हमने वो भी कर दिया है। एंड लास्ट जो 701 का रिक्वायरमेंट है लिस्टेड कंपनीज के केस में, वो भी कर दिया है। नाउ इट इज अ रिक्वेस्ट, ऐसे मत लिख के आ जाना एग्जाम में, ये सिर्फ एक लर्निंग टेक्निक है, हाउ टू रिमेंबर द एंटायर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पैराग्राफ। ठीक है, सो जस्ट अ टेक्निक टू रिमेंबर, प्लीज डू नॉट राइट और मेक दी स्टार्ट्स इन द एग्जाम। आपको लिखना क्या है? जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, सो आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर हियर कि ये टेक्निक फॉर लर्निंग है। ठीक है, ठीक है, सो लेट अस हैव अ लुक एट द मॉड्यूल। एक बारी क्विकली बताओ, समझ आया? तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में ब्रीफ में बताओ, है ना। सो सी, ऑब्जेक्टिव बताने हैं, देन रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल बट नॉट अ गारंटी, एंड देन मिसस्टेटमेंट्स कैन अराइज फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर। एक्सप्लेनेशन वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, ठीक है, सो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिटर में अब यहाँ पर देखो, यहाँ से पढ़ते हैं। स्टेट दैट एज पार्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस द ऑडिटर एक्सरसाइजेस प्रोफेशनल जजमेंट एंड मेंटेन्स प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट, एंड डिस्क्राइब एन ऑडिट बाय स्टेटिंग। अब डिस्क्राइब एन ऑडिट की, ऑडिट में ना शेयर होल्डर ये सारी बातें होती हैं और हमने किया है। The auditor's responsibility are to identify and assess the risk of material misstatement, to design and perform audit procedure, to obtain audit evidence that is sufficient, और फिर fraud के बारे में बता दिया, internal control के बता दिया, accounting policies and SA 540 accounting estimates के बारे में बता दिया, SA 570 बता दिया, PDCS। अब आप इसको कैसे भी याद करो? Presentation, content, structure and your disclosure to achieve the fair presentation। ऐसे 600 में बता दिया दैट ऑल दीज कंपोनेंट्स वी हैव नॉट ऑडिटेड, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं ना। देन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल्सो शैल स्टेट कि 2 स्टार विद गवर्नेंस को हमने स्कोप, प्लान, स्कोप, टाइमिंग बता दिया, सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स बता दिया, ऐसे 260, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल बता दिया, ऐसे 265। फर्दर 260 में वी हैव टोल्ड देम इंडिपेंडेंस एंड रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, एंड लिस्टेड में हम 701 को भी फॉलो कर लेंगे। ऐसे 260 क्या होता है? किसने पूछा ये? हिरन। सो इट इज बेसिकली communication with those starred with governance।
ठीक है. सो इट इज नॉट इन डिटेल एज सच. तो अभी इतना ही समझो दैट द ऑडिटर नीड्स टू कम्युनिकेट विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस अबाउट द प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट. इफ यू रिमेंबर, जहां जॉइंट ऑडिट है और डिवीजन ऑफ वर्क एंड कॉमन ऑडिट एरियाज होता है, वहां पर भी हमने डिस्कस किया था ना कि डिवाइड कर लो कॉमन एरिया और वो सब कर लो, लेकिन वो किसको बताना है? दोज चार्ज विद गवर्नेंस को, है ना. तो दोज चार्ज विद गवर्नेंस को भी बताओगे ना कि आपका क्या स्कोप है, कब आप ऑडिट खत्म करोगे एंड ऑल दैट. ठीक है, हिरल, इज इट क्लियर? See Manoj, the users of the financial statement, वो हम क्या assume करते हैं that they have a knowledge, they are capable of understanding all these things. ठीक है मनोज? ठीक है, तो अब बताओ क्विकली क्लियर है या नहीं. सो लेट अस जस्ट हैव अ लुक कि हमने आज क्या किया है. ठीक है, अ क्विक 5 minutes रिवीजन, देन वी विल एंड द सेशन. ठीक है, तो वी स्टार्टेड आवर सेशन कि क्यों करना है एसए 700, क्यों पढ़ना है. तो वी सॉ द नेम ऑफ द एसए इज फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड ओपिनियन कौन सा है यहाँ पर? अनमॉडिफाइड ओपिनियन. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फॉर्म एन ओपिनियन बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड टू एक्सप्रेस क्लियरली थ्रू अ रिटन रिपोर्ट. कंक्लूजन्स क्या क्या देखेंगे कि वेदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है नहीं, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है तो वो मटेरियल तो नहीं है, एंड द इवैल्यूएशंस क्या है ये आप मेरे को नेक्स्ट सेशन में बताओगे बिकॉज दिस इज योर होमवर्क. जनरल पर्पस फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग दैट गिव्स इट शेप और स्ट्रेंथ. स्ट्रक्चर है ना, रूल्स, स्टैंडर्ड्स. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैंने बताया था क्या होता है, हाउ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विल बी रिपोर्टेड, है ना. तो जनरल पर्पस क्या है? विच मीट्स द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स. स्पेसिफिक हमें पढ़ना ही नहीं है बिकॉज 700 and in fact whatever essays we have done, all these relates to the general purpose financial statements. ठीक है, then general purpose framework is of two types, that is fair presentation framework and compliance framework. दोनों में कंप्लायंस करना है, पर फेयर प्रेजेंटेशन एक्नॉलेजेस, मतलब एडिशनल क्या अलाउ करता है कि आपको एडिशनल डिस्क्लोजर करना है वो भी कर सकते हो, डिपार्चर वेरी रेयर सर्कमस्टांसेस में करना है वो भी कर सकते हो, लेकिन कंप्लायंस में ऐसा कुछ नहीं है. क्लियर? अनमॉडिफाइड क्या होता है? अनकंडीशनल एंड अनरिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, so the opinion expressed by the auditor when the auditor concludes that the financial statement are prepared in all material respects in accordance with the applicable FRF. So true and fair view, present fairly in all material respect, this is the language that will be used. But आप क्या use नहीं करोगे? subject to या foregoing explanation. Foregoing is what? previously said, preceding explanation. अब ऑडिटर्स रिपोर्ट राइटिंग में होता है, यूज ऑफ स्पेसिफिक हेडिंग्स का होता है. कौन बता रहा है ये सारी बातें? एसए 700. ठीक है, टाइटल वी हैव डन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. एड्रेसी to whom it is addressed, shareholders in case of a company, partners in case of a partnership firm. The heading will be what? Opinion. और टू सेक्शन, पहले इंट्रोडक्शन देते हैं ना, वो पिरामिड पढ़ा था ना आपने, एंड देन दैट वी हैव, पहले क्या देंगे? वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का नाम. ठीक है, फिर उसमें क्या क्या है? बैलेंस शीट है, ये सब है, फिर नोट्स भी है. दिस इज द फोर्थ पॉइंट. एंड लास्ट पॉइंट इज व्हाट? डेट, कि इट पर्टेन्स टू what period. And opinion देंगे. Opinion will be that financial statement reflect a true and fair view or present fairly in all material respects. ठीक है, basis में we tell about 4 things, that it is done, it conducted in accordance with essays. Auditors responsibility, under essays के लिए आप रेफर करो कौन सा सेक्शन? Auditors responsibility section. Then we will tell them that we are independent, relevant ethical requirement meet किया है and sufficient appropriate audit evidence मिल गया है, ऐसा auditor believe करता है. Going concern is very simple. SA 570 में you all have seen the reporting requirements, और यहाँ पर क्या कहते हैं? that auditor क्या देखेगा? whether management's use of going concern is appropriate or not. Key audit manner we will be discussing when we will do SA 701. Responsibilities for financial statement of management of those charged with governance for preparation of financial statement for internal control and going concern का appropriateness. Auditors responsibility को we have divided into 3 parts. ठीक है, तो यहीं तक किया था ना. ठीक है, tell me, quickly tell me, जितना भी आज हमने डिस्कस किया है, whether it is clear or not. ठीक है, and before coming for the next session, please read the evaluation part. कोई भी डाउट है तो बताना मेरे को. ठीक है, send in your reply. क्लियर है? कोई डाउट है, पेंडिंग है? बताओ, जल्दी बताओ.
I've tried my level best to simplify the entire format. I'm tried that आपको practical audit report भी side by side दिखाती रहूं, ठीक है? So I hope that has helped all of you in understanding, and it will help you in remembering all these points, ठीक है? So thank you, and do write whether you have understood or not. Thank you and good night.